A very good morning to our respected heads, teachers, parents, and my dear students. I, Miss Kajal Malhotra, feel immense pleasure to extend a warm welcome to our respected CMD, Mr. Bipin Pote sir, our managing trustee, Mrs. Meenal Pote ma'am, and our respected principal ma'am, Mrs. Hina Falke ma'am. Respected heads, teachers, and parents on the behalf of the Cambria International School. Welcome you all to a special morning. We are glad to have you here. Before we begin with today's session, let me put some light on the fact that online education helps in inculcating the habit of self discipline and time management within students and provides them access to unlimited number of educational resources. But at the same time, offline education will continue to play a vital role in the development of students. In order to create an engaging learning experience, the role of instructor is optional, but the role of the learner is essential. But but let me tell you, at TCIS, teachers make sure that there is overall engagement and development, bringing up the balance. Today, we are all here to put a light on key lacking in students' performance in last 2 years, remedies and action plans to fill those gaps, insights on tackling learners' gaps in learning through parents and schools' role in bringing the gaps. And now, without any further ado, I would like to take this great honor to call upon an educationist, an entrepreneur, a by profession who needs no introduction. Under his guidance, TCIS has been holding the number one position of IGCSE school in Kalyan. A charismatic, magnificent persona, our CMD, Mr. Bipin Pote, sir. Thank you. Thank you, Palman. Thank you, Kajal Madam. Thank you. Yes, chalo, we'll start. Good morning, all parents. I'm not seeing any good morning messages. Come on, quickly. Good morning. Are you there? Yeah. Thank you. सही सराब दिशा शौर्या पूनम जी शीतल संतोष गुड मॉर्निंग है ओके दक्षा मिस दक्षा आती प्रियंका गौर स्पृहा पद्मा तेरे this session join 5-10 minutes late, but it's okay. We will start our session and yeah, now I'm saying the good morning, a lot of good morning. Yes, yes, Savita, Abhin Naikodi. Okay, Mr. and Mrs. Naikodi. Okay, good morning. My dear parent, today we are having a lot of agenda. At the end of the session, my talk, not the end of the session, my talk, I will share two good news. So stay tuned up to end. We will start session with some poll. Amul sir, I would like to please मुझे जानना है कि how many parent are together are attending session or only single parent. So we'll take a poll. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Together. Mr. and Mrs. Soda is saying we are together. Thank you. 3 क्वेश्चन चलो एक साथ ही दे दिया अमोल सर ने तो मैं तीनों क्वेश्चन एक साथ ही पूछ लेता हूँ both the how many both parents are attending session what do you think the student has lose the grip on the routine and education how many confirm yes for schooling तीनों एक साथ ही है quickly कितने लोग एक साथ प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं कितने सिंगल कर रहे हैं Amol sir it's happening can I see the poll result Yes, sir. Yes, sir. Visible, sir?
Not yet. आप बता दो रिजल्ट, चलो ठीक है. Still it going fast. First question for both parents attending the meeting. Yes is for 47% and no is for 53. Okay. Still it's counting. For next question, what do you think? Students lose the grip on the routines and education. So many of the parents are saying yes, it's 84% and only no 16%. Third question, how many confirm yes for the physical schooling? Yes is for 83%, no is for 17%. Okay. Makes sense. Thank you. Okay. Thank you, parent. So End the poll. अगर complete हो गया तो you can end the poll. Okay. If it's still happening, you can keep on. So many of the parents are saying that 50% एक तो single parent ही attend कर रहे हैं, double नहीं attend कर रहे हैं. मैं अभी तक नहीं समझाऊँ ये क्या होता है, why we are not attending meeting together, at least some meeting in a year together. Second, many of the parents had given consent yes for schooling, and very soon the March government has already declared full phase schooling will start. At the end, in Hinna Madam talk, she will explain the date, she will announce the date. And third, very important, how many of you think that student has lose the grip on the routine and education? The many of are saying yes, they had, and 17% is saying no, my child is having grip. So before start the session and various topic today in my session, I would like to see how many of you are attentive, and I would like to see all the answers in the chat box. So quickly, मैं दो क्वेश्चन पूछूंगा. So मुझे समझ में आ जाएगा how many of you are really quick and very very responsive in for the session. चलो मैं एक simple question पूछ रहा हूँ आपको, quickly जवाब देना है आपको. What is 2 plus 2? Quickly. Very good. So मुझे ना स्क्रीन पे नंबर दिखते हैं कितने लोगों ने आंसर दिया, कितने लोग अटेंड कर रहे हैं. तो 50% are giving answer. Okay, 2 plus 2, 4. Next question, 4 plus 4. Wow, very good. That's the thing we are doing. Quickly, yeah. 2 plus 2, 4, 4 plus 4, 8. आपने quickly बता दिया. Now you tell me 286 plus 486. Time लग रहा है. Okay, Mr. Rajput is saying 772. But मैंने जब आपको 2 plus 2 पूछा, I got within a second answer आ गया. 4 plus 4 पूछा, within a second answer आ गया. But जब मैंने बड़ा नंबर पूछा आपको, so you took little bit time. So this is how our brain work. हमारा जो ब्रेन है, जब भी जो रेगुलर चीजें हमारे लाइफ में जो हमेशा मालूम है, वो क्विकली आंसर कर देता है. जब भी नई चीज हमारे सामने आती है, we need some time analyze the situation. So this kind of thing today we will see how our brain works, how our psychology works. So what are the different remedies? बच्चों का brain कैसे काम कर रहा है, as an adult हमारा brain कैसे काम कर रहा है. So my dear parent, once again good morning. मुझे पहले disclaimer दे रहा हूँ मैं इस program के through. The disclaimer is whatever I am going to share with you today. Many of my session I used to tell the stories, I used to tell motivational stories and many stuff like that. But today, my session will be around of major research in education field, psychological research on behavior and learning. So उससे मैं share करूँगा proven research, और वो मेरे नहीं है जो दिख रहे हैं. And every year हम लोग एक check करते हैं कि my way of taking session is every year I understand new thing, I evolve, I learn many things, and जो मुझे समझ में नई चीजें आ जाती है as per the market situation, we always share this with parents, students and teachers. In our organization, in all across the ventures, we are doing this since 20 years. जितनी नई चीजें सामने आ जाती है, as we are evolving, I am evolving, we are learning, we are understanding new thing, जो हम हमेशा पेरेंट के साथ शेयर करते हैं. सो एज आई एम आल्सो अ पेरेंट, आई हैव 2 kids. सो जो चीजें मैं मेरे इंडिविजुअल लाइफ में मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूँ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहा हूँ, मेरे पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर रहा हूँ, वही चीजें मैं पेरेंट के साथ शेयर कर रहा हूँ. सो दिस सेशन इज नॉट अ ज्ञान डोज, नॉलेज डोज. दिस इज लर्निंग ऑफ माय ओन लर्निंग, and I want you should also come across that kind of learning, so you may get benefit of that.
So let's start this session with one of the core research in 1970s. I would like to show you the professor film photography workshop, Jerry, Professor Jerry in University of Florida. He had conducted one, he was one of the topmost film photographer in those time. If you want to see some of the photographs, beautiful, beautiful photographs. So those days, उन्होंने इतने एक्सपेरिमेंट किए फिल्म फोटोग्राफी में, बहुत सारे कम रिसोर्सेस थे, टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ी थी, बट द क्रिएटिविटी ही ब्रॉट इन फोटोग्राफी वाज फैंटास्टिक. सो प्रोफेसर जेरी had conducted one research in film photography workshop. So he used to teach student in Florida University. तो उन्होंने एक दिन बच्चों को he had divided his class in two group. One class would call quality group और एक ग्रुप को नाम दिया quantity group. तो what was the difference between quality group and quantity group? So he had allotted one task to quality group and one task to quantity group. तो quantity group को बोला गया कि आपको रोज फोटोग्राफ्स खींचने हैं. सेमिस्टर 2 महीने में है, विद इन 2 months ये सेमिस्टर में एक्सक्यूज मी. So he had given two tasks of segregating student in two tasks. One task was quality work and one is quantity group. What was the quality group and quantity group? जो बच्चे quantity group में थे उन्हें बहुत सारे फोटोग्राफ्स खींचने थे, 100 फोटोग्राफ्स. तो अगर 100 हो गए तो A ग्रेड, 90 हो गए तो B ग्रेड, 80 हो गए तो C ग्रेड. तो उन्हें टाइम दिया गया था 2 months, आपको इतने सारे फोटोग्राफ्स खींचने हैं. एंड सेकेंड ग्रुप, द क्वालिटी ग्रुप, उन्हें बोला गया था सेमिस्टर तक यू जस्ट नीड टू पुट वन गुड फोटो. बेस्ट होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. तो व्हाट डू यू थिंक, एनी केसेस, किसके फोटोग्राफ ज्यादा आए रहेंगे, क्वालिटी ग्रुप के कि क्वालिटी ग्रुप, क्वालिटी ग्रुप क्वांटिटी ग्रुप के कि क्वालिटी ग्रुप के? Miss Palak Patia is saying quantity group. Daksh Dhake is saying quality. Pooja Shah is saying quality. Excuse me, give me. Quantity, quality. Let me see how many. So many of the votes are going in quantity, quality, mix. Thank you. Okay, chalo. Let me tell you, the best photograph had been delivered by quantity group, not quality group. The reason being it, in the process of clicking more photographs, the student honed the skill. Oh, बच्चों ने उनके skill develop कर लिए. क्योंकि रोज फोटोग्राफ्स खींचने थे, कम टाइम था, तो दे यूज्ड टू इन दैट प्रोसेस ऑफ क्लिकिंग लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स, तो लाइट एडजस्ट करना, कैमरा एडजस्ट करना, रोज उसके ऊपर काम करना. और उस प्रोसेस से जो क्वालिटी ग्रुप में थे उन्होंने बेस्ट फोटोग्राफ उनके आ गए. और जो क्वांटिटी ग्रुप था, क्वालिटी ग्रुप जो था उन्हें एक ही फोटोग्राफ था, तो दे वर थिंकिंग हाउ शुड बी माय फोटोग्राफ, परफेक्ट होना चाहिए. दे कुडंट प्रोड्यूस एनी एफर्ट कि उन्होंने एग्जैक्टली किया क्या ये फोटोग्राफ्स के लिए, एंड दे वर मिजरेबली फेल. My dear parent, I would like to appreciate all of you, because in pandemic, we all were having two options. Many were saying that offline education or online education. ये debate चल रहा था काफी महीनों तक, but मैं हमेशा ये communicate हम लोग कर रहे थे कि भाई this is not offline education or online education. You are having choice education or not non-education. क्या ऑप्शन हमारे पास ऑफलाइन या ऑनलाइन नहीं था, हमें चॉइस ये था कि एजुकेशन लेना है कि नहीं लेना है. इट्स लाइक क्वांटिटी एंड क्वालिटी ग्रुप. द मेजॉरिटी ऑफ अस वर इन क्वालिटी ग्रुप, दैट वी टुक अ कॉल ऑफ गिविंग एन एजुकेशन. एंड अगर हम देखेंगे तो रिसेंटली, I don't know how many of you are aware that we had conducted LSRW test. कितने लोग जानते हैं? मेरे ख्याल से अमोल सर पोल में ये क्वेश्चन नहीं डाला गया. How many of you are aware that school had conducted LSRW test grade 1 to 4, 1 to 5?
Understand? So there is 79 numbers. 79%. 79 numbers are available. Okay. Good numbers. So many of you are aware that we had conducted relay sir at WTF. So what is exactly happening in pandemic 2 years? हो क्या रहा है यहाँ हमारे यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन में? Today's session name is bringing back balance. What are the balance missing in student life? अगर हम देखेंगे, which balance is missing? Healthy routine, laziness, social skill, peer learning, lack of discipline, inattention, distraction, and clinginess. ये now they will come in physical school, but ये balance missing हो गए थे काफी बच्चों के. रूटीन नहीं था, बहुत सारे बच्चे लेजी बन गए थे, they had put on weight, सोशल स्किल नहीं थे क्योंकि मिलना जुलना कम हो गया था बच्चों का, फैमिली के अलावा स्कूल में दोस्तों को मिलना, पीयर लर्निंग, अटेंशन, we'll talk about it, distraction, cleanliness, lack of discipline. So these were the बहुत सारे challenges हमें दिखे. So my dear parent, ये now bringing balance back, ये चीजें हुई है and कुछ बच्चों में ज्यादा हुई है, कुछ बच्चों में कम हुई है. आई एम हैप्पी दैट अगर हम लोग core, if I'll ask you, what is the core fundamental skill of knowledge? What do you think? What are the core fundamental skill of knowledge? अगर हम बोलेंगे तो कौन से है? आपको क्या लगता है? Which are the skills we can call ये core fundamental skill है knowledge लेने के? You're thinking? Collaboration, okay. Focus, discipline, strategy. Yes. चलो, किसने आंसर दिया है? Mr. Rajput is saying, sir, reading, writing, speaking, listening. Perfect. Discipline is also reading and understanding. Sandeep Patil is saying, yes. The core fundamental skill of knowledge is पहला तो रीडिंग ये आएगा. विदाउट रीडिंग, अगर रीडिंग ही डेवलप नहीं, तो ये सेशन यहाँ पे ग्रेड 1 to 9 के बच्चे, तो मेरे कुछ पॉइंट्स जो रिलेवेंट होंगे वो ग्रेड 1 to 4 के लिए होंगे, कुछ पॉइंट्स जो मेरे आएंगे जो बड़े बच्चों के लिए होंगे. सो एज ए मिक्सचर पेरेंट यू विल अंडरस्टैंड कि अगर मेरे बच्चे छोटे थे तब क्या लैकिंग हुआ है, अगर आपके बड़े बच्चों के एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ये चैलेंज आने वाला है आगे चल के मेरे बच्चों के लिए. सो stick together, don't think ये relevant नहीं है मेरे बच्चों के लिए. So we are having all parent together over here. So let's use the basic fundamental skill of knowledge. So if I'll ask you, if you want to start burger shop आपको शुरू कर रहे हैं तो क्या लगेगा आपको? आप एंटरप्रेन्योर बन गए पेंडेमिक में एंड यू थॉट लेट्स, आजकल फूड का ही सब जगह पे ज्यादा आउटलेट चालू हो रहे हैं एंड यू वांट टू स्टार्ट अ बर्गर शॉप क्योंकि ट्रेंड वहां पे है, तो आपको क्या लगेगा? ओके, कैपिटल स्पेस मैन पावर. ओके, Rever is saying capital idea recipe. Yes, Miss Hetal, perfect. देखिए, मार्केट नॉलेज फंड, ऑल पॉइंट्स आर मिस्टर भूखे सिंह प्लानिंग, लोकेशन, सोनाली जोशी सिंह फिनांस, ऑफ कोर्स फिनांस लगेगा, मार्केटिंग लगेगा, मार्केट नॉलेज लगेगा, फंड लगेगा, प्लेस फंड, मैन पावर, रेसिपी, कस्टमर फीडबैक, सब कुछ लगेगा. जैसे मैं बता रहा था कि कोर फंडामेंटल स्किल ऑफ नॉलेज इज रीडिंग, स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग. वैसे ही मैं ये बर्गर का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, सबसे पहले तो फंड आएगा ही, मार्केटिंग आएगा ही, लोकेशन आएगा ही, बर्गर बनाने की रेसिपी तो अच्छी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, या यू शुड अवेयर या यू नीड टू ब्रिंग समवन हु इज वेरी गुड इन दैट. उसके बगैर बाकी चीजें उसके साथ में. सो बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. both we need to balance all these things, finance, location and recipe and marketing and everything. So अगर आप समझते हो इन चीजों को, तो सेम इन एजुकेशन, the first important skill, foundational skill of knowledge is reading. Same time reading के साथ, क्योंकि reading के through comprehension, then listening, speaking, these are the, अगर हम लोग बहुत एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी चीजें हम लोग देखेंगे, बट फंडामेंटल स्किल, लेट मी, रीडिंग,
मैंने कम्युनिकेशन नहीं लिखा है क्योंकि वी आर हैविंग डिफरेंट इंटरप्रिटेशन अबाउट कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन इज समथिंग एक्सप्रेसिंग our thought, our need in front of people, asking help, expressing, reading, concept understanding, some good habit. सब तो नहीं बनेंगे. बेसिक सम गुड हैबिट, डूइंग टाइमली वर्क, कीपिंग फोकस, उस दिन का काम उस दिन, हाइजीन, ये बेसिक. तो कोर फंडामेंटल अगर एजुकेशन में है इन स्कूल लाइफ तो ये डेवलप, उसके साथ में फिर बहुत चीजें ऐड हो जाती है. होलिस्टिकली अगर हम देखें तो काफी चीजें ऐड हो जाती है, बट दीज आर द कोर फंडामेंटल थिंग्स. सो दैट्स द रीजन वी हैड कंडक्टेड LSRW टेस्ट फ्रॉम नर्सरी टू grade 5, and we are extremely happy that with the effort of my all team members, my teachers, my heads, we all management, and especially all parents, more than 70% students are good in that in Cambria. Only 30% are lacking, and uske upar school kaam kar raha hai. We are calling them after school, and my entire team, we are working on it. ये एक फायदा हुआ क्वांटिटी ग्रुप का, that we took a call that education. एंड अभी हमें बहुत सारे नए एडमिशंस आ रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं उन बच्चों के स्किल. ओह माय गॉड, एब्रप्टली, मतलब इतनी सारी रिग्रेशन हो चुकी है उन बच्चों के लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग में, हैबिट में, थॉट प्रोसेस में बहुत ज्यादा चैलेंजेस है. अगर आप इफ यू टर्न बैक 2 years बैक, अगर जो बच्चों ने स्कूल में नहीं भेजा और ऑनलाइन एजुकेशन को सीरियसली नहीं लिया, उन बच्चों का आज स्टेटस और आपके बच्चों में देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंस. कुछ बच्चों ने कुछ चीजें ऑनलाइन एजुकेशन में पेरेंट को टाइम नहीं था, नहीं हुई, क्या हुई हम लोग देखेंगे, और उसके क्या रीजंस वो भी देखेंगे, क्या गैप हुए हैं. इफ आई आस्क यू वन थिंग, कि कौन सी चीज है जो आपको लगता है, सो ये क्वेश्चन अक्रॉस grade 1 to 9 पेरेंट के लिए है, बट यहीं पे यू कैन आंसर एज पर फ्यूचर बेस एज वेल. व्हाट डू यू थिंक, व्हिच इज द वन थिंग विल स्टॉप द ग्रोथ ऑफ योर चाइल्ड, आपको लगता है? एक चीज जो आपको लगती है कि that could be growth stopping for my child. Okay, Lecha is saying, check करते हैं. So Govind Kumar is saying self-confidence. Anamika is saying distraction. Yes, Ms. Fernandez is saying, Mr. Fernandez is saying focus, laziness. What was saying? Laziness, education, discipline, continuous learning, confidence. Not focus, distraction, lack attentiveness, yes, overconfidence, many things. तो अगर आप lack of reading, तो ये जब इसमें अगर आप चले जाते हो तो एंड में मैक्सिमम आंसर्स में मुझे ये दिख रहा है कि द कोर थिंग्स आई थिंक विच विल स्टॉप माय चाइल्ड इज फोकस. मतलब रीडिंग के लिए भी फोकस लगेगा, अटेंशन के लिए भी फोकस लगेगा. इसका मतलब आप बोल रहे हो कि शायद डिस्ट्रैक्शन, कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि काम नहीं किया होगा. तो मीन यू आर सेइंग अटेंटिवनेस. तो ये आप बोल रहे हो एंड ऑफ द योर एंड मीनिंग ऑफ ऑल द आंसर्स इज डिस्ट्रैक्शन, कि शायद कंप्लीट एनग्रॉस नहीं होगा पढ़ाई में, पूरी तरीके से ध्यान नहीं देगा या ज्यादा ध्यान नहीं देगा. तो आप ट्राइंग टू से डिस्ट्रैक्शन. Am I making sense? Or you agree that distractions हो सकते हैं? Yes, thank you. So distraction is one of them. मैंने पहले ही बता दिया, ये प्रोग्राम motivational sessions और stories नहीं है. So I'm trying to bring you on one of the important core fundamental need of brain and child. So distractions हो सकते हैं. मैं भी ये जानता था कि डिस्ट्रैक्शन आजकल मैं बहुत बज सुन रहा हूँ 2 साल से. पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल्स, इन एजुकेशन फर्टिलिटी ऑल आर सेइंग डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी से हो रहे हैं, सोशल मीडिया से हो रहे हैं, इंटरनेट से हो रहे हैं. बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन में थे 2 साल तब, देवर नॉट लर्निंग, उन्हें समझ नहीं आ रही थी, बच्चे यूट्यूब देख रहे थे. अभी grade 1 to 3 देवर इन कंट्रोल ऑफ पेरेंट, तो उनके लिए डिफिकल्ट होगा. बट grade 4 ऑनवर्ड टू अप टू 12th एक बड़े एक चंक ऑफ स्टूडेंट एंड पेरेंट है जहां पे उनकी कंप्लेंट ये रही कि बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन में यूट्यूब पे जा रहे, कहाँ डिफरेंट तरीके से जा रहे हैं, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. तो जब इवन आई एम हैविंग माय किड्स,
So my son, he is in 9th standard. So last year in online education he was in 8th standard. तो मैं भी ये सोच रहा था कि ये डिस्ट्रैक्शन होने के रीजन क्या होंगे. टेक्नोलॉजी होगा, मोबाइल होगा, इंटरनेट होगा, वीडियो गेम होगा, कि क्या होगा. तो जब मैंने थोड़ा रिसर्च मेरे लिए किया और जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आई स्टार्टेड सिंस लास्ट ईयर, ये डिस्ट्रैक्शन बातें हो रही है, एग्जैक्टली डिस्ट्रैक्शन है क्या. सो टेल मी द अपोजिट वर्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन. डिस्ट्रैक्शन के अपोजिट वर्ड क्या है? फोकस, अटेंशन, कॉन्सेंट्रेशन, attention. Okay. Attraction. Somebody saying attraction. Okay. Focus. So नहीं, फोकस भी नहीं है, अटेंशन भी नहीं है, अट्रैक्शन भी नहीं है. मैंने आपको पूछा डिस्ट्रैक्शन का अपोजिट वर्ड इज ट्रैक्शन. अगर आप चेक करोगे तो टेक्निकली अगर डिस्ट्रैक्शन की मेजर डिस्ट्रैक्शन कौन सी चीजों को बोला जाता है, तो वर्ड जिस हिसाब से बना हुआ है डिस्ट्रैक्शन, एक कॉमनली वर्ड यूज हो रहा है कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, टेक्नोलॉजी से हो रहा है, मोबाइल से हो रहा है, टीवी से हो रहा है, सोशल मीडिया से हो रहा है, हमारे लाइफ में भी हो रहा है, बच्चों के लाइफ में भी होगा, आगे भी ऐसे ही होगा. आई मीन इतना ही बोलना बाकी था कि अगर ओमिक्रॉन या कोरोना फैल रहा है वो टेक्नोलॉजी की वजह से फैल रहा है, इतना ही बोलना बाकी का. नहीं तो हर चीज का रीजन टेक्नोलॉजी ही बोला गया था इन स्टूडेंट लाइफ. एंड फोकस क्यों नहीं है, तो मैं बता दूं, मैं ये जब ये चीजों के बारे में आई वाज रीडिंग सम रिसर्च कि क्या है डिस्ट्रैक्शन, क्या एग्जैक्टली होता है. तो ये वेरी क्लियर, डिस्ट्रैक्शन का अपोजिट वर्ड है ट्रैक्शन, और दोनों का कॉमन वर्ड है एक्शन. सो व्हाट इज डिस्ट्रैक्शन? आज इस सेशन के बाद में इफ आई सिट विथ माय चाइल्ड और मैं उसके साथ मेरे आईपैड पे लूडो खेल रहा हूं, और उसी समय पे मेरे आईपैड पे एक मुझे ईमेल आ गया, अभी मैं उस ईमेल को पढ़ूंगा, उस खेलने के समय पे वो मेरा डिस्ट्रैक्शन हो गया. इफ आई एम वाचिंग अ टीवी और टीवी देख रहा हूँ, टीवी के समय पे मैं कोई फोन पे बात कर रहा हूँ, तो डिस्ट्रैक्शन हो गया. सेम आई एम रीडिंग समथिंग और उस टाइम पे ही मैं मोबाइल चेक कर रहा हूँ, डिस्ट्रैक्शन हो गया. यू आर लिसनिंग टू मी करेंटली, और सेम टाइम आप आपके फैमिली के साथ वहां पे कुछ बातें कर रहे हो, या कोई सो के देख रहा है, कुछ हाथ में देख रहा है, कोई किचन में खड़ा है, कोई बालकनी में खड़ा है, कोई दूसरा मैसेज भी टाइप कर रहा है, मुझे सुन भी रहे हैं और मैसेज भी टाइप कर रहे हैं, तो ये डिस्ट्रैक्शन हो गया. सो व्हाट इज डिस्ट्रैक्शन? एनी एक्शन, the wrong action or non taking action attitude is distraction. तो बहुत सारे बड़े बच्चे जहाँ 6 to 12 के पेरेंट जब मुझे मिलते हैं और दे बोल रहे थे कि सर बच्चे मोबाइल पे बहुत यूट्यूब और इस पे जाते, तो आर नॉन टेकिंग एक्शन एटीट्यूड इज बिकमिंग डिस्ट्रैक्शन. मोबाइल डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, उसके ऊपर एक्शन हमने नहीं लिया, ये चीजें हमें इन वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है. तो एक सिंपल मैंने बताया था पहले ही, ऑनलाइन एजुकेशन के पहले साल में नॉक्स डालिए या मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट नाम की चीज आती है 300 रुपीज की, वो डालिए, तो उससे क्या होगा, सब ब्लॉक हो जाएगा. एंड देन सेपरेट मोबाइल अगर आप नहीं ले सकते हो तो उसके ऊपर आपको ये चीज डालनी होगी. बट ये कुछ पेरेंट ने किया, बहुतों ने नहीं किया. तो दिस नॉन टेकिंग एक्शन इज क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन. मेजॉरिटी ऑफ टाइम डिस्ट्रैक्शन होने के रीजन हमारे नॉन टेकिंग एक्शन ही होते हैं, नॉन टेकिंग एक्शन एटीट्यूड ही होता है. तो वी जस्ट नीड टू डू द सिंपल हैक. क्या है सिंपल हैक लाइफ में? छोटे, मैंने एडल्ट देखे, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स एंड नोन पीपल जो बोलते हैं यार व्हाट्सएप बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, बार बार नोटिफिकेशन आता है. तो अभी उन व्हाट्सएप डिस्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ऑफ रखना ये एक्शन हमें डिस्ट्रैक्ट, ये एक्शन नहीं लेने का एटीट्यूड हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है. सो सम आर सेइंग दैट बहुत समय पे बच्चों का टीवी देखना चला जाता है, नेटफ्लिक्स पे हम चले जाते हैं. तो सिंपल हैक हम यूज नहीं कर रहे हैं कि जैसे अगर सब्सक्रिप्शन के लिए आप जो ईमेल देते हो, अगर वो ईमेल आपका ऑफिस का ईमेल है जिसको आप रेगुलर चेक करोगे, अगर वो दोगे तो जब आप ऑफिस के ईमेल के लिए इनबॉक्स में जाओगे, वहां पे नेटफ्लिक्स आपको ईमेल भेजेगा कि नया कंटेंट आया, प्लीज वॉच. तो अभी गलत ईमेल आईडी वहां पे देना, ये रीजन है डिस्ट्रैक्शन का. नेटफ्लिक्स डिस्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है. तो आई वॉज रीडिंग अ बुक कॉल्ड इनडिस्ट्रैक्टेबल. तो उसमें वो राइटर नील ही वाज सजेस्टिंग दैट कि मैं आई वाज
I was so much busy in this Netflix content. मैं स्ट्रेस बस्टर के लिए Netflix 1 घंटे से 2 घंटा 3 घंटा देखने चालू हो गया, एंड देन मेरा बहुत सारा नुकसान होना चालू कर दिया. तो आई वॉज थिंकिंग किया क्या जाए, चाहिए तो है स्ट्रेस बस्टर के लिए. सो ही हैड यूज वन सिंपल हैक, बायो हैक जिससे हम लोग बोलेंगे. सिंपल हैक इज, आई एम यूजिंग दिस टर्म इन गुड सेंस, कि आइडिया अच्छी करी उसने. ही हैड परचेस वन राउटर, ऑटोमेटिक राउटर, जो घर का इंटरनेट रात को 10 बजे अपने आप बंद कर देता. अभी वो राउटर चालू भी हो सकता था, बट उसने ऐसी जगह पे राउटर को लगा दिया था कि उसको पेन लेना पड़ेगा, जहां आपके नीचे बैठो, राउटर निकालो और उसको वॉक इन ये करो. सो उसने डिफिकल्ट कर दिया उन चीजों को. सो इट्स अ सिंपल हैक. जितनी सारी चीजें हमें डिस्ट्रैक्शन लगती है उसको डिफिकल्ट करिए, सिंपल मत रखिए. द मोबाइल इज क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन, लॉक आप डिफिकल्ट कर दीजिए मोबाइल का. I'm telling you this for the yourself and your kid as well, कि क्या क्या चीजें हो सकती है. तो मोबाइल डिवाइस में मैनेजमेंट डालना, क्योंकि आई एम वरीड एंड आई एम स्कैर्ड दैट कि आने वाले सालों में ये पूरे साल लोग बोलेंगे कि नहीं 2 साल में अभी इसको मोबाइल की आदत लग गई. आई एम हैविंग दैट काइंड ऑफ केसेस कि इसको मोबाइल की आदत लग रही है, बच्चे इतने डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं, अभी उनको कुछ फोकस ही नहीं करना है, बार बार उधर जा रहे हैं. तो उसे बोल के हमें नहीं रोकना है. वी कैन नॉट क्रिएट वन विलन, टेक्नोलॉजी, मोबाइल, टीवी, और उसको ही हम लोग बोलेंगे अभी इसको ही फांसी दो, बाकी कुछ नहीं. नो, जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं उसमें आप कुछ नहीं कर सकते. नेटफ्लिक्स को आप नहीं बोल सकते हो कि अच्छा कंटेंट मत बनाओ. आप व्हाट्सएप के बिना आपका काम नहीं चलेगा, तो आप दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको रखना पड़ेगा. बट इंपॉर्टेंट एक्शन इज व्हाट, टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दैट डिस्ट्रैक्शन. ये चीज करनी होगी. तो इफ यू आर सीइंग दैट माय चाइल्ड इज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड टेक्नोलॉजी, तो यू नीड टू टेक सम एक्शन ऑन इट. स्पेशली ग्रेड 5 to 12, 1 to 3 के बच्चे पेरेंट के कंट्रोल में है. बट वहां पे मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट अभी भी डालिए, क्योंकि वो फिजिकल स्कूल में आएंगे तो भी दे विल आस्क यू मोबाइल फोन. हमें रिसर्च करना है. जनरली हमारे स्कूल की पॉलिसी से हम लोग बहुत रिसर्च ऐसा देते नहीं है कि इंटरनेट पे जाना पड़े. टीचर्स आर डूइंग देमसेल्फ. तो आगे चल के ये चैलेंज आपके आने के चांसेस है, और ये हुआ है काफी बच्चों के साथ 4 to 12 में फ्रीक्वेंट कंप्लेंट या रिजल्ट नहीं आने के कारण दिखाई दे रहे थे. सो टेक एक्शन अगेंस्ट इट. इन सब चीजों में ये हमें लग रहा है कि डिस्ट्रैक्शन ही अभी की चीज है. ये प्लेटो है, ये तो 2500 ईयर्स. डिस्ट्रैक्शन ये अभी का नहीं है. लेट मी टेल यू, डिस्ट्रैक्शन ये 2500 साल पुराना है. तो उस टाइम पे एक्टिंग अगेंस्ट और बेटर जजमेंट, प्लेटो बोलते थे 2500 साल पहले कि ह्यूमन बीइंग विल ऑलवेज एक्ट अगेंस्ट देयर बेटर थिंग, बेटर जजमेंट. तो जो अपने लाइफ में अच्छी चीजें हमारे लिए उसके अगेंस्ट ही हम काम करेंगे. 2500 पहले साल से बोल रहे हैं. तो इट्स नॉट अ न्यू थिंग दैट आवर किड्स आर ओनली डिस्ट्रैक्टेड. वी वर आल्सो डिस्ट्रैक्टेड. रीजंस टेक्नोलॉजी नहीं थे, कोई और थे. अभी हम लोग टेक्नोलॉजी को ब्लेम कर रहे हैं. तो rather only blaming technology, TV, mobile, we need to take some action जहां पे रिजल्ट नेक्स्ट लेवल पे चला जाए. उसके रेमेडीज में 3 केस स्टडीज आपको बताऊंगा, हाउ वी कैन टेक डिफरेंट काइंड ऑफ रेमेडीज और एक्शन क्या हो सकते हैं. If I'll ask you one thing, you tell me which will determine the success of your child. एक चीज बताइए जो आपके बच्चों को सक्सेसफुल कर सकती है. Quickly. Ethics, okay, Mr. Jaskar is saying yes. Discipline, okay. Loss of laziness, assessing determination, hard work, dedication, effort, smart thinking, focus, hard work and dedication, okay. Quickly, itne, I mean more than 200 parents are here and I'm only getting 30-40 answer. तो बाकी शायद डिस्ट्रैक्टेड है. शायद आपको कैमरा नहीं दिख रहा, बट हमें दिख रहा है आपका कैमरा. वी आर हैविंग पैनलिस्ट सेटिंग. आपका कैमरा अमोल सर इज चेकिंग. सो मेक श्योर दैट वी सो बहुत अच्छे रिसर्च के बारे में बात हो सकती है. अगर फील इंटरेक्ट तो मुझे समझ में आ जाएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो रही. बी ए वार्म रिस्पॉन्स, एक्सेप्टिंग पेरेंट, फोकस, कंसंट्रेशन, पंक्चुअलिटी, रिस्पेक्ट, डेली रूटीन से डेडिकेशन, डूइंग क्रिएटिव. तो आपके जो डिटरमाइन करेगा आपके बच्चों का, तो वहां पे लोग बोल रहे बाद में लिखें. नहीं, डिसिप्लिन नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड
लोगों के लाइफ में सब चीजें लेके आता है, कॉन्फिडेंस लेके आता है, फोकस लेके आता है, अटेंटिव है। एजुकेशन एजुकेशन चलेगा अगर वो एक चीज होगी तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा, और सब कुछ आदमी कर लेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव सब कुछ आएगा। अगर वो एक चीज होगी तो, और वो ड्रास्टिकली मिसिंग है, बहुत बड़े लेवल पे मिसिंग है। एटीट्यूड भी अच्छा बन जाएगा अगर वो चीज होगी तो, ये भी नहीं, ये सब बाद में आएंगे। हैविंग अ विजन, गोल भी बाद में आएगा। चलो मैं बता देता हूँ, ये सब सही है, गोल, फोकस, अटेंशन, अवेयरनेस, सब कुछ सही है, सब कुछ सही, बट पहली एक चीज जो आपके नॉलेज भी लेगा तभी अगर ये एक चीज होगी तो, ये एक चीज होती है तो आदमी नॉलेज भी लेता है, अटेंटिव भी रहता है, फोकस भी रहता है, कॉन्फिडेंस भी ढूंढता है, नहीं सब कुछ पीछे लग जाता है पाने के लिए। अंडरस्टैंडिंग भी पीछे पड़ेगा वो लेने के लिए। द सिंपल थिंग है जो आज की तारीख में मिसिंग है। The answer is that one thing which will determine the success of your child is hunger, 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 भूख। Our kids should have that hunger. वो भूख होनी चाहिए, वो भूख होगी तब नॉलेज आएगा, वो भूख होगी तब कॉन्फिडेंस के लिए भागेगा, कंसंट्रेशन रखेगा। दैट हंगर टेक्निकली, आइडियली इन सोसाइटी अगर आप देखो, देर आर सम स्टूडेंट, दे आर लैक ऑफ रिसोर्सेस, इसकी लैक ऑफ रिसोर्स के वजह से, और रिसोर्सेस पाने के लिए उनके पास वो हंगर है। द स्टूडेंट हु आर हैविंग एवरीथिंग इन प्लेस, उनके पास वो नेचुरल हंगर आएगा नहीं, एंड देन ये डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, कॉन्फिडेंस पे ध्यान नहीं होगा, लेजीनेस आएगा, ये सब चीजें आएगी क्योंकि हंगर ही नहीं है। देखिए ना, सिंपल एग्जांपल है, अगर घर में बहुत ज्यादा भूख लगे ना, जो है खा लेंगे। भूख ज्यादा नहीं लगे, हमने मॉर्निंग भी खाना नाश्ता दिया, दोपहर को भी बहुत खिला है, शाम को तो फिर ये चाहिए वो चाहिए, अपने आप आता है ना, हम खुद भी होते हैं। सही में जब भूख लगती है ना, वी आर रेडी टू ईट एनीथिंग, एनीथिंग। बट जब पेट आधा भरा है ना, तो हम ऑप्शंस देखते हैं, देन क्रेविंग होती है डिफरेंट डिफरेंट खाने की। तो ये हंगर आज की तारीख में बहुत सारे बच्चों में मिसिंग होगा। आई नो सम ऑफ द कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट, उनके पास ये हंगर नेचुरली आएगा क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस नहीं है। तो आपको ये हमेशा चेक करना पड़ेगा टू क्रिएट दैट हंगर, क्रिएट दैट क्यूरियोसिटी इन चाइल्ड्स माइंड। ये हमारा काम है एज ए स्कूल, एज ए पेरेंट, एज ए टीचर, एंटायर फ्रेटर्निटी, हमारा काम है हंगर बच्चों में पैदा करें। हंगर आना जरूरी है, दैट विल डिटरमाइन द सक्सेस। क्योंकि आप कोई भी बुक उठा लो, कोई भी सक्सेस स्टोरी देख लो, मेजर हंगर वाज देयर, आई वांट दिस, आई वांट टू डू दिस। और वो हंगर के पीछे आदमी के पास सब आ जाता है, जितने आपने लिख दिए ना, कॉन्फिडेंस से लेके सब कुछ आ जाएगा। और होता क्या है, सी एक वीडियो दिखाऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो दिखाऊंगा। ये हॉर्स आपको दिख रहे हैं, हाउ दे आर, कैसे चल रहे हो एकदम फ्री माइंड में। क्या लग रहा है आपको, ये इमेज देख के क्या लग रहा है? Quickly, I've started session at 11:15, so I'll be having only 1 hour. चलो क्विकली, क्या लग रहा है आपको? रेस, रेडी टू विन, स्पीड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। दे आर फोकसिंग टू विन द रेस, तो अपने आप में चल रहे हैं हॉर्स रेस। ओके चलो ठीक है, और एक दिखाता हूँ। इसे देख के क्या लग रहा है? पहले के फोटो में और इसमें डिफरेंस क्या है? थिंक। ये फोटो में द चौकी भगा रहा है, कंपटीशन चल रहा है। आई मीन चौकी बहुत चाहता है कि ये भागे, रेस जीते, कंपटीशन करे, बहुत फोकस दे रहा है, वो एनर्जी दे रहा है हॉर्स के पीछे। एक वीडियो दिखाऊंगा, देन विल टॉक। अमोल सर प्लीज हेल्प मी
शो दैट वीडियो प्लीज। Yes. एक वीडियो देखते देना, हम लोग डिस्कस करते हैं। इंटरेस्टिंग वीडियो, 30 सेकंड वीडियो, बट उसमें ग्रे कलर का लास्ट का हॉर्स है, सिर्फ उसको देखना क्यों, हाउ दैट हॉर्स एंड दैट जॉकी इज डूइंग इन रेस में। एक ग्रे कलर का लास्ट में देखना, white grey color ka of the others. Those including Naval Captain, who's a bit all at sea at the moment, is miles back, and even further behind Diamond Memories is tailed off, and there's even one in behind that one, Royal Princess. So a well strung out field head to the final 2 furlongs up front. Matamua with Strocks on the far side now pushed along. The blue sleeves of Tantastic is trying to join in. Further back to Tilia Cordata. Canzone, the pink cap over to the near side, is also running on a little bit as they head inside the final furlong, and Tantastic now strikes the front narrowly from Matamua, then Canzone from Strocks. In behind those highest wave, Naval Captain on the far side running home very powerfully late in the piece, but it's going to be too late. Tantastic here to Matamua. Naval Captain is still flying. Oh, it's close. Tantastic and Naval Captain. Naval Captain's come from an absolute mile back. Very, very tight at the line. Matamua down the near side and close up as well. High, well clear. ओके, थैंक यू। अगर आपने देखा होगा, वो हॉर्स और वो जॉकी दोनों जीतना चाहते थे, वो लास्ट में थे। अगर आप वो वीडियो हम लोग भेज देंगे लगता है, तो अगेन यूट्यूब पे भी अवेलेबल है कि लास्ट में था, बट नाइदर जॉकी वाज रेडी टू क्विट, नाइदर नॉर हॉर्स वांट्स टू क्विट, बोथ वर टुगेदर। जाना है, हमें जीतना है। सो मैं बिल्कुल लाइफ को रेस नहीं समझता हूं। तो पहले तो ये मेटाफोरिकली मत लीजिए सेम वे कि लाइफ इज ए रेस और हमें भागना है, हमारे बच्चे घोड़े, उनको जीतना है, ये बिल्कुल नहीं है। ये मैंने इसलिए दिखाया, हंगर दोनों में होनी चाहिए, पेरेंट और बच्चों में। तो माय पॉइंट वाज हंगर। इट्स डोंट टेक दैट माय चाइल्ड नीड्स टू बी इन रेस एंड ही शुड रन। वो खुद से आना चाहिए हंगर। वो लास्ट में था, वो it should not, and the jockey were jockey were also persistent कि भाई नहीं है तो मैं क्रिएट करूंगा, मैं उससे मोटिवेट करूंगा। तो however brain works, you know, ये करना क्यों पड़ेगा, और मैं 3 रेमेडीज बताऊंगा, व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ बिहेवियर, एक साइंटिफिक इक्वेशन बताऊंगा आपको, एंड 3 साइकोलॉजिस्ट के मैं आपको रिसर्च बताऊंगा लर्निंग के लिए और हैबिट के लिए। अभी उसके पहले व्हाट डू यू थिंक, मेनी ऑफ अस आर अवेयर कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है इन आवर हेल्थ के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, फिर भी हम नहीं कर पाते। मेनी ऑफ अस आर अवेयर दैट कि एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई हेल्थ के लिए, अच्छा खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम नहीं कर पाते। क्यों, क्या रीजन है? कम ऑन क्विकली। कैजुअल एटीट्यूड, लेजीनेस। हाँ, लेजीनेस है, बट लेजीनेस क्यों है? नॉट हैबिचुअल। ओके, मैं आपको रिसेंटली मैंने पढ़ा पेंडेमिक में 2 साल पहले कि ये क्यों है, मालूम तो है सबको, सब करना है। मुझे ये बहुत क्वेश्चन था यार, मालूम है इसको ये करना है फिर भी नहीं कर रहा। मैं खुद कुछ चीजें समझ में आ रहा था कि ये मुझे करनी है, बट आई कुडंट डू। नो अवेयरनेस, विल पावर। Snadu is saying, Hetal Power is saying, no awareness, not ready to change environment in discipline. ठीक है, चलो। मैं फादर ऑफ साइकोलॉजी सिगमंड फ्राइड, इन्होंने 2 रीजन दिए, व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी डू, व्हाई वी आर डूइंग व्हाट वी डू, और व्हाट वी आर डूइंग व्हाट वी डू। फादर ऑफ साइकोलॉजी सिगमंड फ्राइड ने कंक्लूजन दिया है आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ वर्किंग एंड रिसर्च, हाउ द ह्यूमन ब्रेन वर्क्स। क्यों हम नहीं करते? हमारा ब्रेन जो है साइंटिफिकली डिजाइन इन सच अ वे, वी ऑलवेज रन बिहाइंड ओनली फॉर द 2 रीजन। हमारे हर एक्शन के पीछे 2 रीजन है, हर एवरी एक्शन। इसको मेरे सेशन के बाद में इंट्रोस्पेक्शन करके डीप सोचना, क्योंकि ये इतने मैंने बोल दिया आपको समझ में ऐसी चीज नहीं है, सोचना पड़ेगा थोड़ा आपको। अवर बिहाइंड अवर ईच एक्शन देयर आर ओनली 2 रीजन why we do what we do। हम एक्शन लेते तो क्यों लेते? 2 ही रीजन होते ह्यूमन बीइंग के। they were saying win or fail, नहीं। तो 2 reasons are to gain pleasure, to avoid pain, to gain pleasure, to avoid pain। चेक कर लेना, to gain pleasure, to avoid pain। Every time
behind every action, decision, behavior, our intention deep down is to avoid pain and gain pleasure. अभी ये प्लेजर के रास्ते हर कोई अलग अलग ढूंढता है, वो क्यों ढूंढता है अभी चेक करेंगे हम। वो मैं जब रिसर्च बताऊंगा तब आपको इन चीजों के साथ में इसको देखना पड़ेगा। तब फादर ऑफ साइकोलॉजी सिगमंड फ्राइड बताते हैं, बिहाइंड एवरी एक्शन, डिसीजन, बिहेवियर, ह्यूमन ब्रेन ऑलवेज थिंक, वांट, गेट प्लेजर एंड अवॉइड पेन। पेन नहीं चाहिए हमें। एवरी जो चीजें पेन देगी, जैसे हम लोग एक्सरसाइज करना शुरू करते, पेन होता है छोड़ देते, डाइट करना या भूख के रखना है या अच्छा फूड नहीं मिलता तो पेन हो रहा है, तो कुछ अच्छा खा लिया तो प्लेजर मिल जाता है, तो घर पे आके टीवी देख लिया, मोबाइल बीच में उठा लिया तो प्लेजर मिल रहा है। सोचिए, सो सेम वे बच्चे भी उसके पीछे भाग रहे हैं, टू गेन प्लेजर टू अवॉइड पेन, टू गेन प्लेजर टू अवॉइड पेन। तो करना क्या है, 3 रिसर्च में से पहला रिसर्च है द रेमेडी। तो हमने देखा गैप क्या है, ब्रिंगिंग बैलेंस बैक लाना है, बच्चों को क्या गया है, डेली रूटीन नहीं रहा है, हेल्थ ऑन टॉस है, लेजीनेस बढ़ गया है, बेसिक रीडिंग अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, हंगर मिस हो चुका है। तो ये सब चैलेंजेस हमने देखे। ये पेंडेमिक में बढ़ गए, ये पहले से थे, पेंडेमिक में ज्यादा सामने आ गया, ये नई बात नहीं है। मैंने बताया डिस्ट्रैक्शन अभी का नहीं है, डिस्ट्रैक्शन 2500 साल पुराना है हमारे दुनिया में, ये प्लैनेट पे। तो ह्यूमन बीइंग were, are and will always be distracted. Distraction is what? Not taking action is called distraction. Distraction, traction. Traction मतलब pull. तो pull क्या है? Distraction के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना will make you non distracted. तो एक्शन नहीं लेते हैं हम लोग, क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि एक तो हंगर नहीं है, एक्शन नहीं लेते, उसका रीजन है वी ऑलवेज सीक, वी ऑलवेज वांट, वी ऑलवेज बिहाइंड टू गेट प्लेजर, अवॉइड पेन। तो ये सीक्वेंस में अगर आपने समझा होगा अभी तक का मेरा टॉक। तो फर्स्ट रेमेडी, एक्शन, हाउ टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। ब्रिटिश हेल्थ जर्नल, ये इन्होंने आज से इन 2000 इन 10-15 years बैक, बट रिसर्च अभी सामने आया हार्वर्ड में। अगर आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैड सब्सक्रिप्शन, अगर आप लेते हो 1500 का आता है, बहुत सारे रिसर्च उन लोग बेचते हैं जहां से आप ह्यूमन माइंड को स्टडी कर सकते हो। हमारे इंडिविजुअल अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सब सामने आता है आपके। तो उन्होंने वहां पे रिसर्च मैंने पढ़ा था, हार्वर्ड में ये रिसर्च दिया गया था, जहां पे ब्रिटिश हेल्थ जर्नल, इन लोगों ने क्या किया, व्हाई पीपल आर नॉट डूइंग एक्सरसाइज, या बताने के टाइम पे भी उनको हेल्थ अच्छी करनी है, उनको इन्फ्लुएंस करना है एक्सरसाइज के डिसीजन के लिए। सो दे कि कुछ चीजें करते हैं हम लोग, लेट्स सी, रिसर्च करते हैं। तो सब्जेक्ट को मतलब इन रिसर्च जिसके ऊपर रिसर्च करना है उस इंसान को सब्जेक्ट बोला जाता है। सो दे इन 248 पीपल दे हैड डिवाइडेड इन 3 ग्रुप। तो ऑल 248 पीपल वर सब्जेक्ट, जो लोग थे उन्हें सब्जेक्ट बोला गया और उन्हें डिवाइड किया गया 3 सेक्शन, 3 ग्रुप में। द फर्स्ट ग्रुप कॉल्ड कंट्रोल ग्रुप, सेकेंड ग्रुप को बोला गया मोटिवेशन ग्रुप, तीसरे ग्रुप को बोला गया इंटेंशन ग्रुप। I'm telling you the research of implementation, intention. Implementation, intention. Let me see the slide. The first remedy we are discussing, ये research called intention, implementation, intention. मैंने आपके सेशन में आपको रिसर्च बताया, हंगर बताया, बिहेवियर का रीजन बताया, क्यों नहीं लेते बताया, बट हम लोग एक्शन क्यों नहीं लेते ये लोग चेक कर रहे थे, सबको बताया। तो इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन रिसर्च के दौरान 3 लोग ग्रुप अलग, मोटिवेशन ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप, इंटेंशन ग्रुप। पहले ग्रुप को बताया गया कि एक्सरसाइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल ग्रुप सिर्फ बता के छोड़ दिया 248 में से एक ग्रुप को। सेकेंड ग्रुप मोटिवेशन ग्रुप था, उससे बताया गया कि देखिए ये मैनुअल लीजिए, पढ़िए कि हेल्थ के फायदे कितने हैं, इसको अगर आप एक्सरसाइज करोगे, अच्छा डाइट करोगे तो फायदे क्या क्या होते हैं। तो उनको कुछ मटेरियल दिया गया पढ़ने के लिए, उनको कुछ वीडियोस दिखाए गए कि देखिए आप ये ऐसा करोगे तो हार्ट क्रोनिक डिसीज के लिए हेल्प होती है, हार्ट की फंक्शनिंग भी अच्छी होती है, दिखाया गया। मोटिवेट भी किया गया और उनको ट्रैक किया गया मोटिवेशन ग्रुप को। पहला कंट्रोल सिर्फ उन्हें बताया, दूसरों को
वीडियोस दिखाया, पढ़ने के लिए मटेरियल दिया गया, एंड अगेन उनका ट्रैक किया गया कि कितना बताने के बाद एक्सरसाइज करें. एंड द थर्ड इंटेंशन ग्रुप इज, उनको भी जो सेकेंड ग्रुप में किया, इनको भी वीडियो दिखाए गए, मटेरियल दिया गया, मोटिवेट किया गया. तीसरी चीज उन्होंने एक चेंज करी इंटेंशन ग्रुप में. उन्होंने क्या किया, मैं तीसरे ग्रुप के साथ में, उन्होंने उनको बताया, मोटिवेट किया, वीडियो दिखाया, कंटेंट पढ़ने बोला कि आप लिख देना, आई विल डू एक्सरसाइज एट इतने मिनट इतने टाइम में, अगर नहीं करूंगा तो क्या करूंगा. आप समझ रहे हो. पहले ग्रुप को, कंट्रोल ग्रुप को सिर्फ बताया गया आपकी आपको एक्सरसाइज करनी, छोड़ दिया, और ट्रैक कर रहे थे कि लोगों को बताने के बाद करते कि नहीं. दूसरे ग्रुप को, 248 में से दूसरा ग्रुप जो मोटिवेशन ग्रुप था, उन्हें बहुत मोटिवेट किया गया. हम बच्चों को मोटिवेट करते, बताते, देख ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, देख ऐसा है वैसा है, सब कुछ बताते हैं, बता दिया गया. मोटिवेशन. थर्ड ग्रुप इंटेंशन ग्रुप, इनको भी बताया गया, मोटिवेट किया गया, अच्छा दिखाया गया, लेकिन उसके साथ में उनको बोला कि आप ये शीट भरो कि आप कितने तारीख को, कितने मिनट, डेट, प्लेस, टाइम, सब कुछ डाल दो, और नहीं करोगे तो क्या दे. तो रिजल्ट क्या था उसका देखिए, ये रिसर्च है. परसेंटेज ऑफ पार्टिसिपेंट हु एक्सरसाइज एट लीस्ट फर्स्ट. तो ग्रुप 1 38%. इनफैक्ट 2 वालों ने कुछ नहीं किया मोटिवेशन, उनको सब सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिला. एंड थर्ड ग्रुप जो था 91% उनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हुआ. अभी वो कंटिन्यू कितना करेंगे ये अलग रिसर्च होता है, बट करने के चांसेस तभी बढ़ते हैं जब आप उसके साथ, एक्शन के साथ आप कंप्लीटली कमिटमेंट मांगते हो उनसे, टाइम ले लिया उनसे, कभी लोगे, कितने बजे करोगे. दिस रिसर्च कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन. देयर आर लॉट ऑफ इल्यूजन इन आवर माइंड कि हम लोग ना बहुत सोचते हैं, तो हमें लग रहा है कि वी आर प्लानिंग थिंग्स, और एक्शन इज डिफरेंट. प्लानिंग करना और एक्शन करना, बोथ थिंग्स आर डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट. वी नीड टू अंडरस्टैंड इट. बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में होती है प्लानिंग में. द कंसेप्ट कॉल्ड मोशन, इट्स नॉट एक्शन, इट्स इन आवर माइंड. मोशन में है कि हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, चल रहा है, कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे. मैं हमेशा बोलता हूँ, tons of action is better than tons of theory. आज के बाद में we should take one action on one remedies immediate, जो हमें दिखाई दे रहे हैं. तो I was explaining to my student of 10th and 12th in different ventures of Pote Vidyalaya, Pote tutorials, difference between goal and system. अगर आपको वेट लूज करना है तो वेट कितना कम करना है ये आपका गोल हो सकता है. दैट कुड बी योर गोल, बट गोल से कुछ नहीं होता. व्हाट आर द सिस्टम यू आर क्रिएटिंग, व्हाट आर द मैकेनिज्म यू आर क्रिएटिंग, व्हाट सिस्टम मैकेनिज्म यू आर क्रिएटिंग. तो गोल एक है कि मुझे 10 kg 5 kg कम करना है. व्हाट इज द सिस्टम, डेली वॉक कितना करूंगा, खाऊंगा क्या, ये सिस्टम है. तो गोल इज नॉट इंपॉर्टेंट. बच्चों को फ्यूचर में क्या बनाना है वो डिफरेंट स्टोरी, दैट्स अ गोल. वो क्या बनेंगे, दैट्स अ गोल. सिस्टम क्या डेवलप किया है वहां जाने के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो हमारे हाथ में, वो स्कूल में एंटायर थिंग्स वी आर डूइंग फॉर दैट. पेरेंट्स, एज ए पेरेंट, हम जो बच्चों के साथ जितना अच्छा सिस्टम क्रिएट करेंगे उतना गोल में जाने के चांसेस बढ़ेंगे. यू कुड बी अ कोच, आप एक कोच हो और आपका योर गोल कुड बी टू विन अ चैंपियनशिप. आपको चैंपियनशिप जीतनी होगी, बट योर व्हाट विल बी योर सिस्टम, टू रिक्रूट अ गुड प्लेयर, to take maximum practice and train your assistant coaches as well. तो गोल है चैंपियनशिप जीतना, बट सिस्टम क्या है, अच्छे प्लेयर रिक्रूट करना, प्रैक्टिस बहुत लेना, और असिस्टेंट कोचेस को तैयार करना. आप म्यूजिशियन हो सकते हो, यू वांट टू क्रिएट अ म्यूजिक पीस, ब्यूटीफुल म्यूजिक पीस, दैट कुड बी योर गोल. व्हाट सिस्टम विल बी नीडेड फॉर दैट, to do a lot of practice for that music, taking feedback, break down that simple patch. आप एक बिजनेसमैन हो सकते हो, योर गोल मस्ट बी वांट दैट कि मुझे एक अच्छा बड़ा बिजनेस तैयार करना है, $1 million बिजनेस तैयार करना है, बिजनेस गोल है मेरा $1 million अर्न करने का. दैट कुड बी योर गोल. व्हाट सिस्टम यू विल बी नीडेड, गुड प्रोडक्ट, टेस्टेड प्रोडक्ट, बेस्ट टीम एंड मार्केटिंग कैंपेन. अगर ये 3 चीजों में काम नहीं हो रहा है, सिर्फ $1 million कमाना है,
इट विल नॉट वर्क। तो मुझे बच्चों के लिए जो भी कुछ चाहिए मुझे मेरे लाइफ में चाहिए। वी जस्ट नीड टू क्रिएट अ सिस्टम, और सिस्टम क्रिएट करना घरों में ये सिस्टम रेडी होता है, पेरेंट्स के थ्रू ये रेडी होता है। मैं इसे बोलता हूँ इक्वेशन ऑफ बिहेवियर। ये सिस्टम के लिए आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए मैंने एक इक्वेशन दिया है, ये बिहेवियर इज इक्वल टू फंक्शन एंड पीई। बिहेवियर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। कोई भी बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है फिजिकल एनवायरनमेंट जो उसके सामने होता है। तो ये एनवायरनमेंट सिस्टम के थ्रू क्रिएट करना विल बी आवर जॉब इन स्कूल एंड एट हिज ओन हाउस। फिजिकल एनवायरनमेंट, B is equal to F functional of physical environment। अगर we all, बच्चे ही नहीं, आप मैं सब कुछ, हम लोग तीन चीजें, we all imitate the three group, मतलब तीन लोगों को हम लोग फॉलो करते हैं, बच्चे भी, एडल्ट भी, एनी ह्यूमन बीइंग, मैक्सिमम ह्यूमन 95% ह्यूमन बीइंग along with me, हम लोग तीन चीजों को फॉलो करते हैं, तीन ग्रुप्स को फॉलो करते हैं, इमिटेट करते हैं उनके हैबिट्स। देखिए द क्लोज वन, जो हमारे नियर बाई लोग हैं उनके जैसा ही हम लोग करते हैं। द मेनी, ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं उसके पीछे हम चलते। और तीसरा द फेमस एंड रीच, पॉपुलर, रीच भी नहीं बोलो, फेमस एंड पॉपुलर बोलिए, फेमस बोलिए, सक्सेसफुल बोलिए, वी फॉलो दैट। ये तीन ग्रुप को हम फॉलो करते हैं। नंबर वन ग्रुप नियर प्रॉक्सिमिटी लोग, नियर वेसिनिटी में जो हमारे लोग हैं, मैक्सिमम बार बार उन्हें देख रहे, उन्हें आप में बच्चे फॉलो करते। नंबर टू, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ना, कल्याण डोंबिवली में ज्यादा से ज्यादा लोग कचरा रास्ते पे डालते हैं, हम रास्ते पे डालते। यही लोग सिंगापुर में जाते हैं, यूएस में जाते हैं, तो वहां देखते हैं कि ज्यादा लोग नहीं डालते, डस्टबिन में डालते हैं, हम डस्टबिन में डालते हैं। ज्यादा लोग जो करेंगे वो हम करते हैं। तीसरा माइंड पे इफेक्ट होता है, द फेमस और सक्सेसफुल पीपल, उन्हें हम फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें, हमें लगता है कि वो ट्रायल एंड टेस्टेड है, उन्होंने किया तो मुझे मिलेगा, तो उनके कुछ एक्टिविटी करते हैं। तो हमें चेक करना है कि हमारे हैबिट, थॉट प्रोसेस कौन सी जगह से इमिटेट किए गए, कहाँ से आए हैं। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सक्सेस या बच्चों को फ्यूचर में क्या करना है, वो गोल इज डिफरेंट स्टोरी। क्रिएट अ मैकेनिज्म, क्रिएट अ सिस्टम, दैट वाज इम्प्लीमेंटेशन, इंटेंशन। सेकेंड रिसर्च आई वुड लाइक टू टेल यू, द फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है इन्हें, बिहेवियरल साइकोलॉजी में इन्हें भी बोला जाता है, थॉर्नडाइक। लॉ ऑफ लर्निंग, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी पे इनके अच्छे अच्छे रिसर्च है। उन्होंने एक लॉ ऑफ लर्निंग का एक एक्सपेरिमेंट किया एंड काफी सक्सेसफुल रहा, उसे आज भी रेफर किया जाता है। वी विल सी वन वीडियो, देन वी विल डिस्कस। यस अनमोल सर। Yes, sir. एक एक्सपेरिमेंट किया था कैट के साथ में, पजल बॉक्स उन्होंने क्रिएट किया। पजल बॉक्स में कैट को डाल दिया था एंड कैट को डालने के बाद में उन्होंने वो ऑब्जर्वेशन नोट करे। सॉरी अमोल सर, मैंने एक स्क्रीन शेयर किया था इसलिए हो रहेगा, आप आपका करिए। Sir, should I play the video again? हाँ दिखाइए ना वीडियो। Fascinate Thorndike. To answer it, he built some ingenious puzzle boxes from which cats could only escape by operating latches. And in you go. नहीं दिख रहा है मुझे। स्टॉप शेयर करिए क्योंकि आपने और मैंने एक The cat appears to be मुझे नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो। इट वाज विजिबल, ओके ठीक है, दिखाइए अमोल सर। ओके ओके सॉरी। Okay, sir. But how is a new skill learned? That was a question which began to fascinate Thorndike. To answer it,
he built some ingenious puzzle boxes from which cats could only escape by operating latches. And in you go. The cat appears to be very clever in engineering its escape, solving the problem with a deftly placed paw and a push of its nose. But Thorndike didn't believe that an animal, even a clever cat, understands the consequences of its behavior. When he placed a cat in the puzzle box for the first time, Thorndike was unable to see any evidence of flashes of insight. The successful actions appeared first by chance. He proved that the apparent cleverness arose by trial and error, and used graphs to measure the rate of learning. A well-practiced cat quickly recalls the actions that help it escape to its reward of food. If an action brings a reward, Thorndike believed that that action becomes stamped into the mind. In his thesis, he explained further his ideas about learning, that behavior changes because of its consequences. He called this his law of effect, which explained how even wild creatures develop new habits. Okay. So Thorndike, he wrote in his research, in his thesis, that how the behavior influence new habit, new skills कैसे develop होते हैं. कैट को रखा गया एक पजल बॉक्स में उन्होंने डिफरेंट कैट के डिफरेंट फूड रखा गया वहां पे बाहर, एंड ही हैड स्टार्टेड रिकॉर्डिंग और राइटिंग द ऑब्जर्वेशंस. पहले कैट अंदर चली गई, तो दैट कैट कुडंट कम आउट इजीली, उन्हें पॉसिबल नहीं हो रहा था बाहर आना. तो पहले उन्होंने लिखा कि 6 मिनट लगे कैट को बाहर आने के लिए, देन 5, देन 4, एंड लास्ट 1.5 एंड देन 6 सेकंड में कैट बाहर आ गई. लॉट ऑफ प्रैक्टिस के बाद. सो हैड रिकॉर्डेड ऑल द ऑब्जर्वेशन. फूड एक तो बाहर था, भूख लगी हुई थी उस कैट को कि फूड मुझे पजल बॉक्स के बाहर जाऊंगी तो फूड मिलेगा, रिवॉर्ड है एक्शन के बाद में. और लर्निंग कि उससे बाहर कैसे आना है, प्रैक्टिस के थ्रू लर्निंग. सो माय डियर पेरेंट, अगर बच्चों में हमें कोई भी नई स्किल डेवलप करनी है, वी जस्ट नीड टू डू सिंपल थिंग्स कि जो चीजें हमें लगता है कि उनमें आनी चाहिए उसको अप्रिशिएट करके रिवॉर्ड करना चाहिए. ब्राइब नहीं देना चाहिए कि ये करोगे तो ये मिलेगा. नो, व्हेनेवर, मतलब नेचुरली, इट शुड हैपन नेचुरली. कि उसने कोई बुक रीड कर ली तो आपने सडनली उसको बोल दिया कि आई एम वेरी हैप्पी दैट आपने ये बुक रीड कर लिया, एंड देन टुडे आई विल मेक समथिंग स्पेशल फॉर यू एंड बिकॉज आई एम हैप्पी. कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से चेंज होता है. सी हाउ आवर माइंड वर्क्स, हाउ आवर ब्रेन वर्क. बात करते समय मोबाइल बीच में लेंगे या घर पे आने के बाद स्ट्रेसफुल होते तो वीडियो गेम खेलना, ये आपके माइंड पे अगर ब्रेन में सेट हो गया कि ये प्लेजर देता है, यू विल डू इट again and again and again. Same way बच्चों के साथ हो रहा है. So brain is seeking behind to get pain, to get pleasure, avoid pain. Thorndike का observation बता रहा है कि practice will help you to form a new skill. तो बहुत जगह पे जब हम लोग ने स्कूल में we had started one A to Z ऐप, और वीक में हम लोगों ने बोला ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए और 2-3 बार उस रीडिंग के वीडियो आप भेजिए, टीचर को भेजिए, क्योंकि रिपीटेडली ये स्किल डेवलप होने के चांसेस होंगे. सो देयर वर मेनी थिंग्स व्हिच वी आर डूइंग और वी थिंक वी विल डू, दैट बिहाइंड देयर इज अ रीजन होता है कि क्या है.
कुछ कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ हमारे नए रिसर्च सामने आते हैं, उसके हिसाब से हम लोग एक्शन लेते हैं। तो थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट ट्रायल एंड एरर थ्योरी ये है, हाउ वी लर्न ऑल स्किल। पहले अगर जूम शुरू हुआ तो वी ऑल वर लिटिल एंशियस कि कैसे होगा, जूम पे जाना है, मेल में जाओ, क्लिक करो, जूम डाउनलोड करो। बट स्लोली ग्रेजुअली उसकी ब्रेन को प्रैक्टिस हो गई, तो जैसे कैट का था 6 मिनट लगे, बाद में वो टाइम 6 सेकेंड पे आ गया। सेम वे पहले जूम पे मीटिंग अटेंड करने के लिए हमें मेन ब्रेन क्रूशियल सिचुएशन में हमेशा सिचुएशन को एनालाइज करके टाइम लेता है, नई चीजें सीखने के लिए टाइम लेता है। सेम वे जब आपके बच्चे अभी 2 साल घर पे थे, अभी स्कूल में आएंगे, डोंट एक्सपेक्ट कि प्रॉम्प्टली सब कुछ चीजें हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि अभी ब्रेन एक कंफर्टेबल हो गया है ऑनलाइन लर्निंग के लिए। अभी सडनली कुछ चीजें फिजिकली आएगी, तो योर चाइल्ड ब्रेन विल टेक टाइम, यू जस्ट नीड टू गिव टाइम टू योरसेल्फ एंड योर चाइल्ड एज वेल। We need to understand this psychology, ये लगेगा। देखिए हम लोग जो चीजों के लिए कंफर्टेबल बन जाते हैं ना, वो इजीली करते हैं विदाउट सोच। ब्रेन हैबिट इज नथिंग बट द रिलायबल सॉल्यूशन ऑफ प्लेजर। हैबिट इज नथिंग बट अ रिलायबल सॉल्यूशन ऑफ प्लेजर। ब्रेन इजी कर देता है चीजों को। जैसे अगर आप पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे गाड़ी चलाते हो तो इजीली चलाओगे कि प्लेन रास्ता है, आपकी हमेशा की जर्नी होगी। वही ड्राइवर अगर आप मनाली चले जाओ, वहां पे आड़े टेढ़े रास्ते, तो अभी आप कॉन्शियस बन जाओगे, क्योंकि ब्रेन अभी एनालाइज कर रहा है कि ये नई सिचुएशन है, अभी इसको ठीक से एनालाइज करना पड़ेगा। तो टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन उस समय पे ब्रेन लेते रहता है और उसको सिंपल करने के पीछे होता है। वो जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना वो स्मूथ हो जाता है। तो जब आप मनाली के लोकल ड्राइवर देखोगे, वो इजीली फोन पे बात करते घाटियों में गाड़ी चलाते, तो उनके लिए वो ब्रेन रूटीन बन गया है। वही हम वहां जाएंगे, वो ट्रैफिक में आएंगे, तो उनके लिए ब्रेन के लिए वो चीज नहीं है। तो इट्स अ साइंस कि जब अगर मैं आपको पूछूं कि आपका, आप और मैं या कोई बच्चा आज से लेके 1 साल तक रोज 8 to 10 आवर्स क्रिकेट खेलेगा, तो 1 साल के बाद क्या रिजल्ट आएगा? ऑब्वियसली विल बिकम अ बेटर क्रिकेटर। एक अच्छे क्रिकेटर बनने के बहुत सारे स्कोप हो जाएंगे। तो 1 घंटे रोज के 8-10 घंटे की प्रैक्टिस। तो सेम वे अगर 2 साल में बच्चों ने कुछ रॉन्ग प्रैक्टिस 6 घंटा 8 घंटा किए हैं, तो भी सडनली चेंज नहीं होंगे 1 महीने में 2 महीने में। वी ऑल नीड टू क्रिएट एनवायरमेंट, जो मैंने बताया, फिजिकल बिहेवियर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ फिजिकल एनवायरमेंट। वी ऑल नीड टू क्रिएट अ सिस्टम so we can influence them to take right action। जितनी सारी राइट चीजें वो इजीली एक्सेस होनी चाहिए, ये एक हैक है। जितनी सारी राइट चीजें जो है, जैसे डस्टबिन में हमें कचरा डालना होता है इंडिया में पहले से, बट हमें कभी भी डस्टबिन नहीं मिले जाता। हमें टॉयलेट में ही जाना होता था, बट टॉयलेट कभी इंडिया में बने ही नहीं उतने, तो हम लोग ने तो जितनी सही चीज है, तो अभी आदत बन गई है ना सालों साल से लोगों को, अभी वो डिफिकल्ट होगा चेंज करना। तो सेम वे बाहर जाते हो ऑप्शन दिखेंगे, रूल स्ट्रिक्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस ब्रेन को मालूम है ऐसा करेंगे तो क्या होगा, सो ब्रेन विल हेल्प यू कि नहीं ऐसे नहीं करना। तो ये चीजों के पीछे हमें राइट चीजें जो है, द ओनली गोल वी ऑल शुड कीप इन आवर माइंड दैट ऑल द राइट थिंग्स शुड बी इजी टू डू। टैक्स पेड करना इजी होता है अगर टैक्स पेमेंट की साइड बहुत इजी हो तो चले जाते हैं। इफ यू वांट योर चाइल्ड शुड ईट अ फ्रूट, दैट fruit should be at table, not in the fridge, क्योंकि आंखों के सामने नहीं है तो इजीली नहीं होगा। एक डच एक्सपेरिमेंट हुआ था वहां पे कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत लोग यूज करें, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एरिया में 100 बंगलो थे, वो बंगलों में ही उन्होंने देखा कि कुछ 80% लोगों का लाइट बिल बहुत ज्यादा है, 20% लोगों का कम है। तो क्यों है? तो उन्होंने चेक किया, तो जो 20% लोगों का लाइट बिल कम था, उनका जो इलेक्ट्रिक मीटर था उनके एंट्रेंस आते जाते समय सामने था, बाकी 80% बंगलों का एमएससीबी का मीटर नीचे था। ये दिखती नहीं थी, इनको रोज दिखती थी, मैंने इतना टाइम एसी लगाया क्या हुआ, मैंने इतना टाइम गीजर लगाया क्या हो रहा है। तो इजी बन गया कंट्रोल करना। तो जितनी राइट चीजें हैं ना वो सामने होनी चाहिए। व्हाटएवर हैबिट यू वांट दैट योर चाइल्ड शुड हैव, उसको इजी बनाएंगे, डिफिकल्ट मत बनाएंगे, क्योंकि ये नीडेड है। अभी लास्ट 1.5 ईयर में बहुत सारे बच्चों के माइंड में बहुत सारी मिसकंसेप्शन, रूटीन नहीं है, हेल्दी हैबिट, वेट। अभी जैसे हम लोग
अमोल सर एंड हिना मैडम एंड माय टीम विल डू दैट। अभी वेट लेंगे उनका, हम लोग चेक करेंगे कि फिजिकल स्ट्रेंथ अभी कहाँ पे है, तो आने वाले 1-1.5 महीने में कुछ एक्टिविटी वैसी प्लान होगी कि फिटनेस और हेल्थ का अवेयरनेस बढ़ाया जाए, क्योंकि वो डिटोरेट हो चुकी है। कंसेप्ट आज इंग्लिश का टेस्ट हमने लिया है, मैथ्स का भी लेंगे, साइंस का भी लेंगे, वी विल सी दैट कि कॉन्सेप्चुअली अभी कहाँ खड़े हैं बच्चे। सो इन चीजों को आपको समझना चाहिए। तो 1% मार्जिनल चेंज वी ऑल नीड टू ब्रिंग। द थर्ड रिसर्च हुआ था 1% मार्जिनल थ्योरी। आफ्टर दैट आई विल स्टॉप ओवर हियर। ये ब्रिटेन 110 ईयर्स ब्रिटिश, जिन्होंने पूरे दुनिया पे राज किया, इन्होंने साइकिलिंग में एक भी गोल्ड मेडल नहीं लिया था, एक भी गोल्ड मेडल। 110 ईयर्स ऑल ओलंपिक में उन्हें गोल्ड मेडल नहीं मिल रहा था। तो दे वर थिंकिंग कि कैसे होगा। इनफैक्ट उनका हाल ये हो चुका था इन साइकिलिंग में, ओलंपिक के अलावा टूर द फ्रांस नाम की एक बहुत डिफिकल्ट रेस होती है, वर्ल्ड चैंपियनशिप बोला जाता है साइकिलिंग की, वो भी एक भी नहीं जीती थी उन्होंने। साइकिल कंपनी ने उन्हें साइकिल देने से मना कर दिया कि वी विल नॉट प्रोवाइड साइकिल्स टू द ब्रिटिश टीम, बिकॉज वो हारेंगे तो हमारी कंपनी का नाम खराब होगा। तो उन्होंने एक कोच हायर किया, कोच डेव ब्रेल्शोल्ट। 2003 में ये कोच आने के बाद द फेट ऑफ ब्रिटिश साइकिलिंग had been completely चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ? 2003 में ब्रेशोल्ड आए, 2008 5 साल में उन्होंने जो चीजें की उसे बोला जाता है 1% मार्जिनल थ्योरी। 1% इंप्रूवमेंट मार्जिनल थ्योरी, 1% इंप्रूवमेंट मार्जिनल थ्योरी। उस थ्योरी के थ्रू उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे चेंजेस उन्होंने he had started a process called break down everything required साइकिलिंग करने के लिए जो जो चीजें लगते हैं उस सबको उन्होंने ब्रेक किया। उन्होंने साइकिलिंग के लिए सबसे पहले साइकिल की सीट 1% चेंज इन एवरी एक्शन। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि बड़े चेंज नहीं करने हमें, 1% चेंज इन एवरीथिंग विल क्रिएट a huge impact। 1% चेंज इन एजुकेशन प्रोसेस, 1% चेंज इन रूटीन चेंज करेंगे, इट विल लीड टू अ बिग सक्सेसफुल इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। तो उन्होंने क्या किया कि 100 साल से टीम हार रही, तो उन्होंने देखा कि टीम को मोटिवेट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक्शन लेने पड़ेंगे। छोटे छोटे चेंज क्या किए, सीट का उन्होंने सीट कंफर्टेबल कर दी, नंबर 1। साइकिल और लाइट इन्वेंट कर दी है, और लाइट वेट साइकिल देखे। टायर जो थी, टायर की ग्रिप आने के लिए उसके ऊपर अल्कोहल यूज किया गया ताकि टायर की ग्रिप अच्छी आ जाए। हेलमेट जो लोग साइक्लिस्ट पहनते हैं उसे एरोडायनेमिक शेप दिया गया, उसे भी लाइट किया गया और स्टडी बनाया गया। जो कपड़े साइक्लिस्ट वो जो शॉर्ट पहनते थे, ओवर शॉर्ट, उसको इलेक्ट्रिक शॉर्ट उन्होंने पहना है ताकि मसल की रिकवरी जल्दी हो जाए। साइकिलिंग के प्रैक्टिस के तो मसल पेन होता है, मसल टिश्यूज ब्रेक होते हैं, उसके लिए एक मसाज जेल देखा कि उसे रिकवरी फास्ट आ जाए। उन्हें इन 2003 में ही ब्रॉट अ सर्जन हाउ टू वॉश हैंड। उन्हें उस टाइम पे बताया गया कि सैनिटाइजर यूज करिए, हाथ मत मिलाइए किसी से, क्योंकि देन यू विल कैच अ कोल्ड। और बॉडी में सर्दी खांसी थोड़ी सी होने से आप स्लो हो जाते हैं, आप अपने आप स्लो हो जाते हो। वो जहां सोते हैं उसके पिलो, मैट्रेस, कलर, जहां पे डस्ट पकड़ में आ जाए, स्मॉल ऐसे 50-60 चेंजेस कंटिन्यूसली प्रैक्टिस किया और ट्रैक किया। माय डियर पेरेंट, इन 2007 बीजिंग ओलंपिक में 60% गोल्ड ब्रिटिश टीम ने जीते। 2017 में पूरे रिकॉर्ड ब्रेक हो गए साइकिलिंग के, पूरे गोल्ड उनके पास चले गए। टूर द फ्रांस जो साइकिलिंग की सबसे डिफिकल्ट कंपटीशन है, वो उन्होंने 6 साल में 5 बार जीती। 1% चेंज इन एवरीथिंग दैट रिक्वायर्स साइकिलिंग, ये थ्योरी है। नाउ हाउ यू कैन यूज इट, you need to think। मॉर्निंग बच्चे उठने से लेके सोने तक, उसके पढ़ाई करने के तरीके से, उसके स्कूल के जाने के तरीके से, खेलने के तरीके से, टीवी देखने के तरीके तक, हर प्रोसेस में 1% चेंज, नॉट अ बिग चेंज, 1% चेंज, one tiny decision will lead you to success। This the power of 1% marginal improvement। ये आप कर सकते हो। the important part, the power of parenting में अगर आपको बताऊं तो एक ट्रू एक्सपीरियंस एक साइकोलॉजिस्ट का ही बताऊंगा मैं आपको। in 1965 लाज्लो पोलगार नाम के साइकोलॉजिस्ट, एंड ही वाज अ फर्म बिलीवर दैट
टैलेंट इज नॉट गिफ्टेड, टैलेंट इनेट नहीं होता है, इससे वी कैन क्रिएट टैलेंट. In Hungary, 1965, in 1965, he was so firm believer that he had started writing a letter to lady called Clara. शादी नहीं हुई थी उन्हें, तो क्लारा एक स्कूल में टीचर थी, तो उसे वो लेटर लिखते थे कि मैं एक फर्म बिलीवर हूँ, तो मुझे एक ऐसी वाइफ चाहिए कि जो मुझे ये इस एक्सपेरिमेंट में साथ दे. ये ट्रू एक्सपेरिमेंट है, आप गूगल जाके इसको पढ़ सकते हो. पोलगार सिस्टर, लाजलो पोलगार. तो लाजलो पोलगार ने एक वाइफ ऐसी ढूंढी कि टीचर है, उसे बताया कि मैं ये चाहता हूँ कि टैलेंट क्रिएट किया जा सकता है, तो मैं शादी करके जो बच्चे आएंगे उनके साथ मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ. दिस इज द पावर ऑफ पेरेंटिंग, माय डियर पेरेंट. 1965 Hungary, he got a marriage with the Clara. Clara was not adamant like him कि ऐसे ही होता है, but she knew that कोई भी स्किल अगर रेगुलरली फॉलो के ट्रैक करे, एडवांस स्किल करे, तो उसमें बच्चे डेवलप हो सकते हैं. उसने चेस ढूंढा, मतलब चेस एक्टिविटीज ये कर ली कि मुझे मेरी बच्चे जो भी होंगे, लड़का लड़की, उन्हें चेस में ग्रैंड मास्टर बनाना है, वर्ल्ड प्लेयर बनाना है. इन 1960 होम स्कूलिंग का पैटर्न था नहीं, तो वो टीचर थी उसकी वाइफ, तो उसने डिफरेंट तरीके से बच्चों को पढ़ाया. सब कुछ चेस के पीछे उसने तीनों बच्चों को रेडी किया, पूरे एफर्ट्स डाले वहां पे. एंड जहां पे लाजलो पोलगार की तीनों बच्चियां, द लास्ट वन Sophia, she had become a world chess player 20 years or record. तीनों, the three of girls, all of them were the top chess player. He had created everything around the chess. बचपन से उनके साथ 2 साल के नहीं हुए चेस खेलना चालू कर दिया, उनके कंपटीशन में उन्हें भेजा गया रेगुलरली. तो one fine day he found that his girl was midnight, in 2 रात को 2-3 बजे टॉयलेट में जाके चेस खेल रही थी. And then he had asked his daughter that, better leave that pieces, leave them alone, that pieces, and come. So she had giving an answer that, Papa, these pieces are not leaving me. This chess के जो छोटे छोटे पीस हम लोगों ने बनाया है खेलने के लिए, they are not leaving me. ये माइंड बना दिया. तो पावर ऑफ पेरेंटिंग बहुत है. अगर आप सोचो, so I am trying to do with my kids that some of the experiment जो मैं सीखा हूँ, so मैंने आपके आज सामने रखे ताकि आप इसमें से कुछ सीख के अगर आप उसके ऊपर कुछ काम कर पाए, क्योंकि ये चैलेंजिंग टाइम अभी शुरू हुआ है. मेरा मानना है ये खत्म नहीं हुआ है. बहुत लोग सोच रहे कि एवरीथिंग हैज बिकम नॉर्मल, बट अभी चेंजेस क्या आएंगे, आपके बच्चों में कितने सारे चेंजेस आएंगे, जब फिजिकल में आएंगे तब आपको पता चलेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या क्या अभी तो बैठे थे घर पे. So very soon you will come to know many things जो अभी तक पता नहीं है घर पे. एंड ऑनलाइन में नुकसान ही नहीं हुआ, फायदा भी हुआ. एटलीस्ट आपके बच्चों का पैटर्न आपको पता चला, आपको टाइम मिला बच्चों को समझने के लिए. जो अंडरस्टैंडिंग आपकी हुई है बच्चों को देख के समझ के, उसे प्लीज लिख के रखिए, अंडर माइंड में रखिए कि अभी फिजिकल में जाएगा तो कौन से पैटर्न होंगे जो उसको तकलीफ देंगे लाइफ में. सो इट्स आवर टास्क टू क्रिएट अ मैकेनिज्म. फिजिकल बिहेवियर का इक्वेशन है फिजिकल एनवायरनमेंट, फंक्शन ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, और वी कैन क्रिएट दैट मैकेनिज्म. गोल क्या होगा मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग अ सिस्टम टू इन्फ्लुएंस दैट गुड बिहेवियर. आई वांट टू मेक राइटिंग इजी. तो इसके लिए आज के सेशन में हम लोग ने बातें करी. सो 2 गुड न्यूज. मैं यहाँ रुक जाऊंगा, मैंने जो बताया था कि न्यूज दूंगा. The important part that since the pandemic, हम लोग मैसेज आते रहेंगे आपको. The school had last 3 years, although the inflation इतना है, सब कुछ rates बढ़ रहे हैं, but school did not increase the fees. बिल्कुल नहीं बढ़ाई. Negligible hike हुई थी कुछ, वो भी हम लोग ने last year 5% discount, and many were having that perception that the school must be earning. ऑनलाइन चल रहा है, बट मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था ऐसा है नहीं, क्योंकि बाकी स्कूल और कैम्ब्रिया में बहुत डिफरेंस है. ये स्कूल इंटरनेशनल बोर्ड के हिसाब से कंपेयर मत करिए. दूसरा, द थिंग्स दिस स्कूल हैड डिलीवर वाज नॉट अदर स्कूल्स वर डूइंग, जैसे स्टेशनरी देना, ये देना, मेनी थिंग्स वर डूइंग. सो आई एम नॉट बूस्टिंग और हम लोग बताने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको. आई एम जस्ट टेलिंग यू, इवन दो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट 6-7 फ्लोर हमारा 1920 में प्लान था, कोविड की वजह से लेट शुरू करना पड़ा, लोन हमने रुकवा दिया था. बट जो
5th फ्लोर में हमारा खर्चा हुआ था बिल्डिंग के लिए, उसका 35% मोर एक्सपेंसेस कोविड के बाद हुआ है। दिस इज हाउ द रेट्स आर चेंजिंग, आप सभी लोगों को मालूम होगा, बट स्कूल की फीस उस रेशियो में चेंज नहीं हो रही है। द गुड न्यूज इज टू हेल्प द पेरेंट, क्योंकि हमें मालूम है चेंजेस अभी हुए मार्केट में, क्या होगा आगे मालूम नहीं। नेक्स्ट ईयर 1st to 10th में we are not increasing the fees, we are going to keep the same fees in coming year, but there is one rule which all you need to follow. हम लोगों ने 4 इंस्टॉलमेंट काफी 3-3 महीने के गैप में दिए हुए हैं। यू जस्ट नीड टू स्टिक दैट 4 इंस्टॉलमेंट। अभी कोई टीचर फोन नहीं करेंगे फिजिकल इसमें, या कोई लोगों को फोन करने के लिए टाइम नहीं होगा। यू जस्ट नीड टू सबमिट द 4 PDCs before the school essential distribution. Neither we will want to waste our energy. हमें बहुत सारी चीजें नहीं करनी है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने। मैनेजमेंट, माय टीचर, माय कोर टीम will be busy for the collection of fees, then it will become difficult to give the new thing to my student, our student. So it's very simple. We are going to, और देर मैं आज ही डिक्लेयर कर रहा हूँ, even though the pandemic होगा, आगे क्या होगा मालूम नहीं, it's never ending. हम लोग ये नहीं कर रहे कि फीस इंक्रीज करो बहुत ज्यादा और नेक्स्ट ईयर पैंडेमिक हुआ तो उसको डिक्रीज करो। सो वी आर कीपिंग सेम फीस। अगर कुछ इशू हुआ भी तो दिस विल फीस विल रिमेन सेम। न उसके लिए हम लोग कोई 5% का डिस्काउंट नेक्स्ट ईयर ऑफर करेंगे आगे, ना इधर हम बढ़ा रहे हैं। नहीं तो एक चॉइस हमारे पास था, देयर वर द स्कूल ग्रुप्स, आई एम सीइंग दैट द स्कूल आर इंक्रीजिंग फीस और बोल रहे हैं हम लोग को डिस्काउंट देंगे। कैम्ब्रिया इज ऑलवेज ट्रांसपेरेंट फॉर ऑल दिस थिंग्स। There will be only some changes. The another good news मैं दूंगा, उसके हिसाब से अगर कुछ changes स्कूल स्टेशनरी में आएंगे तो आएंगे, वो भी डिपेंड है, but we are going to do it. My dear parent, मैंने फीस के बारे में आपको बताया। वेरी सिंपल रूल हम कर रहे हैं। जो हमारे 4 इंस्टॉलमेंट है, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी, 4 आपको देने होंगे। 4 पहले ही सबमिट करने होंगे, क्योंकि कोई फॉलोअप हम लोग नहीं दे पाएंगे वहां पे, क्योंकि इसके लिए टीम बढ़ानी पड़ती है, ओवरहेड्स हो जाते हैं। एंड अगर उसके लिए बेसिक रूल हमने रखा है कि जनवरी के बाद आपको डिटेल सर्कुलर मिल ही जाएगा कि जनवरी के बाद अगर आप देते हो तो देन देयर विल बी सम चेंज। वो जो पेनल्टी वगैरह था 500 लेट, वो भी हम लोग नहीं रखेंगे, बट अगर आप जनवरी के बाद देंगे तो आपके लिए फी चेंज होगी, 100% चेंज होगी। सो ये एक रूल है। अनदर गुड न्यूज इज we are doing it. We are creating a STEM curriculum in Cambria. This is 3D model that मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो last more than 4-5 months we are working on it. So we are going to create a 3 zone art and craft area. Then another is the coding lab, and the third is रोबोटिक लैब। तो ये करिकुलम हम डेवलप कर रहे हैं। आने वाले साल में ये करिकुलम डेवलपमेंट शुरू होगा, नॉट फुल फ्लेज। सम एक्टिविटी विल स्टार्ट कमिंग ईयर, ये अभी एकेडमिक ईयर में, जो 1st to 9 तक के बच्चों के लिए काफी एक्सपेरिमेंट, 12th तक ही होगा। कोडिंग, रोबोटिक्स, जो फ्यूचर है एजुकेशन की नीड, हर बच्चे का बेसिक फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अरिथमेटिक ऑफ मैथ्स, कम्युनिकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कोडिंग, रोबोटिक्स, ये सब चीजों का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, इन स्पाइट ऑफ एनी फील्ड दे विल। तो उसका स्पेशल करिकुलम हम लोग बना रहे हैं, बनाया, ऑलमोस्ट एक्टिविटी प्लान किए गए हैं। फेज वाइज जो शुरू होगा, ये लैब नेक्स्ट ईयर आ जाएगा। मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ तो पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दिखा रहा हूँ। इवन दो स्कूल एक्सपेंसेस हैज इंक्रीज अ लॉट, इन 6-7 फ्लोर इज स्टिल डेवलपिंग, ग्राउंड नए से बन रहा है, ये होगा। ये अभी प्लान नहीं था, ये 1920 से ही प्लान में था, बट बिकॉज ऑफ कोविड वी हैड स्टॉप, एंड अभी स्लोली ग्रेजुअली हम लोग उससे लेके जा रहे हैं। बट वी आर नॉट इंक्रीजिंग द फीस, इवन दो वी आर इंक्रीजिंग द वेरियस एक्टिविटीज एंड वेरियस फीचर्स इन स्कूल। वी आर मेरे लिए इजी था कि मैं ये दिखाऊं और अगेन फीस बढ़ाऊं, बट हमें नहीं आता है ये सब चीज। आई डोंट नो हाउ पीपल आर परसीव थिंग्स, एंड स्कूल मार्केट में लोग काम करे तो उसकी वजह से, बट वी आर वेरी क्लियर एंड ओपन, ये चीज है, ये नहीं है। We are giving our best. My entire team is giving best in terms of I'm मेरे बच्चे जा रहे हैं, I'm having in coaching classes as well, तो मेरे पास कैलेंडर के जितने स्कूल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन थी, कितने स्कूल्स ऑनलाइन एजुकेशन के बाद कोई LSRW पे काम नहीं कर रहा है एक्स्ट्रा बुला के, they are not doing it. ये मैं आपको जता नहीं रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, the school which you are sending your child is having some thought of education. It's not a money making machine we have created, or else I'm having many tricks to do that.
So we are having thought, intention, very clear values, vision of the school, taking student at next level. Future education की जो need है उसके हिसाब से changes शुरू होंगे. मैंने बताया स्कूल एसेंशियल में एक बेसिक चेंज आ सकता है कि हम लोग स्टेम लैब की फीस आपसे नहीं लेंगे, बट देयर विल बी सम, जो लास्ट टाइम बटरफ्लाई टॉयज था वो नहीं होगा. देयर आर सम करिकुलम वी आर डेवलपिंग जो उनके साइंस और इसके साथ होगा. वो अगर टॉयज उनके ऐड होंगे जो इंडिविजुअल आपको घर पे मिलेंगे एक्सपेरिमेंट के साथ में, उसकी कॉस्ट ऐड हो सकती है. वो भी जो वहां पे देनी है वही. वी आर नॉट एडिंग एनी अमाउंट ऑफ क्रिएटिंग द लैब expenses and the teacher expenses. बहुत लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती कि कराडी पाथ जब हमारे बुक में होता है तो स्कूल एसेंशियल के लिस्ट में कराडी पाथ की बुक की कॉस्ट होती है, बट उसके लिए जो टीचर लगता है वो कभी नहीं होती. तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 200 होते हैं. वी आर नॉट आस्किंग यू दैट टू डू दैट, क्योंकि अभी तक फुल फ्लेज में जब आएगा. और मैं अभी बता दूं आपको कि लास्ट 3 साल से अगर आप स्कूल की फीस का ब्रैकेट देखिए और मार्केट की फीस के स्ट्रक्चर देखिए, बीइंग इंटरनेशनल स्कूल वी आर नॉट इंक्रीजिंग ओनली बिकॉज द पैंडेमिक में 2 साल गए एंड द नेक्स्ट ईयर मुझे मालूम है कि चैलेंजेस और आ सकते हैं, तो हम लोग उसको रख ही नहीं रहे हैं कि वापस कम करो ज्यादा करो. और अभी मैं ये भी डिक्लेयर कर दे रहा हूं कि देयर विल बी नो 5% डिस्काउंट, इवन दो ऑनलाइन भी चलेगा तो कुछ भी होगा तो द फीस विल रिमेन सेम, because we are going to do a lot of things that many of the losses like you are bearing, everyone is having challenge. everyone ऐसा कोई नहीं है पैंडेमिक में जिसे चैलेंज नहीं है, सबको है. we all just need to stick on the right education, good education, which we are doing. Thank you very much for believing us, and have a faith on school, have a faith on teachers, my team. This school is having very good intention. मैं हमेशा बोलता हूँ, वैसे अभी भी बोलूंगा, ऐसा नहीं होगा कि हमारी टीम में टीचर्स गलती नहीं करते होंगे, होते ही होंगे. बट द वन थिंग मेक्स us different than other school is the right kind of values and right kind of thought we are having. Thank you very much. Yes, Hina madam, and I'm also over to you. Thank you so much, respected sir, for insightful words. I would like to take this great honor to call upon our respected principal, Mrs. Hina Falke ma'am. A leader is one who lights the path to the impossible and takes those to follow to the great height. It is injustice to proceed to the event without calling upon our wings of light, a pillar of strength. She is a most serene and calm persona. She has 18 years of experience in education field. She is always savior and a constant source of motivation. So here I invite Mrs. Hina Falke ma'am to enlighten her with her wise words. Thank you so much, Kajal madam. Thank you very much, Bipin sir, for your enlightening words. I'm sure the parents have today a lot of takeaway to take with them, and it was very enriching this Sunday morning. My dear parents, are you all awake? Good afternoon to all of you. Can I have a very quick good afternoon? Good afternoon. Yes, yeah, definitely. Thank you so much. Okay, I would not take names of each and every parent. Good afternoon. Lovely, great. Everybody is awake. That's really nice. Definitely, you have to, with such a enlightening session, you have to keep your eyes and ears and your soul open so that you can take a lot of good things with you today. What I'm going to talk about is I'm going to talk what is expected out of the parents and what is our planning for this remaining months of the year and what we are going to do the next academic year. Very rightly, sir had said almost all the things, like if you want to see change, you have to adapt to change. And with the little babies that we have with us, we consider all children as babies because we believe that we are no less than second parents to the children, isn't it? Right? So that is the reason we kind of give a lot of importance for child-centric education, for which very recently, sir has announced about having STEM curriculum in the school, which the planning is already going on. And thank you, sir, that we as a school
Instead of doing a lot of things for the children, parents are aware about it. This is the third year that we are not looking at increasing the fees. So that is a really good news for the parents. I'm sure it is, isn't it, parents? If you could send your reactions. I just want it to be a little interactive, so that is why I'm seeking for reactions. Yes. Oh, yes. I can see a smiley as well. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, great, great, great. So that is actually a great news. Yeah, one, the fees is not increasing. Another one, we are adding value to our curriculum. All right. Yes, great, great, great. Amol sir, if you could make me host, I want to share certain things with parents. I mean, if you could allow me sharing. I'm already in the panel, so if you could allow me sharing. Thank you so much. All right. Okay. All right, parents, as you all are, I mean, the primary section has still not started, and I have seen a lot of queries amongst the parents that when are we going to start the school, offline school for the children? So we will be definitely starting the offline school, and I just want to assure all the parents that we are ready to start the offline school because we have already started for grade 6 to 12, and we are very successfully doing it. And at this very moment, I can very proudly vouch that we began very early. Even the conduction of examination, the other boards are still thinking whether to conduct, not conduct. But our board examinations have already started, and my 10th standards and 12th standard students are already appearing for the examinations. And we have followed all the norms that needs to be followed only because we are supported by a very efficient COVID leadership team. On your screen, you have the COVID leadership responsible team members who are there. This I am telling the parents because primary section, the preparation or expectation out of the parents, the expectations that we expect from the students, and also how is our team is not being done from grade 1 to 4, which will be done very shortly with you all. But to start with, I'm just trying to tell you that yes, we are ready. All right. Then the next things, all class teachers also have been trained, and all of them are doubly vaccinated, including our the non-teaching staff, the teaching staff, and all of us who are dealing with the children, and we are ensuring all safety precautions for our children. All right. Then a detailed meeting on rules to attend offline schooling will be conducted for primary section in specific very shortly, maybe in the upcoming week, so that you are very much aware about it, what to do, how to do, and when to do. So this we will be taking the meetings with all the primary section parents, which would be again mandatory to attend, and we insist parents to attend that because it will be for the betterment of your ward and to understand the school's movement. Today, I would keep it a little brief to explain you certain important pointers about our planning. Firstly, I would say that we must acknowledge that we can reduce the risk of COVID-19 in schools at this point of time until and unless we eliminate it completely. So that is our responsibility. So this is just a kind of a short. I want to tell you that we are prepared. This I want to only tell you that we are prepared with whatever situations that come our way. We are prepared to deal with all the situations that come our way whenever it is the question of teaching learning processes of our children. See, COVID safety is not the purpose of the organization. We actually want our children to educate themselves offline and make education fun for them. We want to establish joy of learning with COVID safe environment because we believe that we have to still live with this for a long time, even though we are saying that the impact is little less and now it is getting going away from the society. Yes, it is, but then we have to be a little careful about this, and I want to ensure parents that we are kind of careful about handling children. The next thing that I want to say it very briefly about ERP.
Very recently, you must be receiving messages about, you all have received the message about, very quickly we are going to completely shift on one communication platform, that is ERP. Our management has been very generous throughout 2.5 years of COVID situation, wherein we have provided extra sets to the teachers to coordinate with you, communicate with you. You had enough access for teachers to talk to them directly with the WhatsApp numbers that they had. But having said that, gradually we are now coming to kind of offline schooling, which very recently, if you have heard it in a newspaper, the government has given a go ahead that you can start a school with full capacity. But unless and until the GR arrives with us, we will not take that particular decision. However, we are going to begin the school very soon. Towards my talks end, I will explain it to you that when are we looking at starting school for grade 1 to 5 as well, because the 6 to 12 school children are already coming to the classes. All right. Now, talking about the ERP, parents try and understand that I know in this last 2.5 years, parents got adjusted to kind of, MS Teams, handling WhatsApp, then again handling ERP. So you still have three modules of communication at your, you to handle. But now we want that, since the school is starting full-fledgedly offline slowly and gradually, we also want slowly and gradually all parents to come on one platform of communication, that is ERP. So what you can expect on ERP? The classwork, which if you can see, you can still see it. The classwork is available. Now, parents who are here with us can put it in the chat box that how many of you have noticed classwork and homework on your mobile apps? Come on, let me see how many of you are actually active on ERP. Out of you who are sitting, yes, Disha Malusre, yes, Rajshri, yes, okay, see Tony, okay, all right. You have noticed, yes, Naisha, you have noticed Prajakta Jagruti, okay, yes, very nice. But there are so many, I think more than 200 parents and many few of you. All right, okay, fine. So what is your feeling after you have observed classwork and homework and attendance right in front of your eyes? What do you feel? What do you feel? What's your feeling? How does it feel? Good, good in the sense, isn't it an all information all information app that you're really nice? Okay, thank you. Informed, you feel informed. That is very important. It should be eye to eye. Yes, it's good you to get updated on regular basis. It is good confidence, total updation from the school. Yes, that is very important. Yes. So yes, very nice. So, dear parents, what I want to tell you is that yes, it is good. But there are many parents. I would not like to name it as percentage, but there are many parents who are still who are still not come to ERP. They have not downloaded the app. So it's my request, and I expect as well to the parents, from the parents, those who have not downloaded the app yet, they should download, because you will have handy information on your handset or on your laptops. So classwork, homework, attendance, worksheet details, communication, timetable, syllabus, event details, venue chart, progress report and report card, payment of fees, everything you will be able to track of your child, which is very good thing about knowing what's happening with this school. You will not be uninformed about anything. Very recently, we have also started communication module, where many of the parents have gone and tried to register their concern through that was an exemplar, but then now you will have to go full-fledgedly on that from the next academic year. Just to give a little information further, I would just like to tell you that this is how the ERP looks on your mobile. All right. Shreya Shinde is well informed about the syllabus, in regular updated about what our kid is learning. Thank you so much, Mrs. Shinde. All right. So this is how it looks on your mobile app. Your attendance, your classwork, and your description. Those who don't know, I've put it for their
a reference at this point of time. And let me tell you, parents, all of our class teachers have already conducted the training on communication module and how to access the communication module. Isn't it? How many of you have attended the trainings? Let me see. If you have attended, write attended. And you know, attended. Pankaj Pathak, Amol Chaskar. Yes, thank you. Uttam Verma, attended. Very good. That's really nice. So I would not take you through. No, Disha Malusare, no. See, if you have not attended the training, then we have sent you a kind of a video on how to go ahead with communication module. And it's really futuristic. Yes, it is. All right. So how to go ahead with communication module through your mobile as well. And you can also go through the web portal. We will again conduct a training shortly. We'll let you know when. The parents who have missed out on the training, we will see how we can do it. So if it is more parents, then we will do it one single training for all of you so that you attend it. But the condition is that you have to attend it. If you do not attend such important and informative sessions that will help you and your children, then we will also be not so we'll be helpless. I mean to say that. Okay, so thank you so much. And this is how, this is all mobile application look out here, over here. Okay. Then if you are viewing it via, and many of you are looking it through via web only, you have an eCampus over here, and this is a menu chart. If you see below over here, you can see general circular, message, almanac, event list, menu chart, examination timetable, examination syllabus, homework, everything. On top of it, when you see the top part of it, just give me a moment. I'll just, okay. When you go to academics, when you see the drop down of academics, you will see everything, the homework, the classwork, and everything. I will just try to kind of show you the live example of how to go through the web, because many of you access through mobile, and then when you try to do it through this, it becomes a little difficult for you. So I will do that for you and show it to you. Just give me a moment so that it is very live for you. See, if you are able to see this user authentication MICM app, I've kept it on my screen itself. I'm just using one of our students' ID, all right, and I would try to use it. Can you all see? Can you put a yes in the chat box so that I am sure what is happening? Can you see? Yes. All right. All right. Okay. Thank you. Thank you. Okay. If you see on my screen, अगर आप लोग देख रहे हैं screen पे, तो मैं इसीलिए बता दे रही हूँ क्योंकि मोबाइल में when you see, no, तो आपके स्क्रीन पे जब आपका पहला पेज खुलता है, जैसे मैंने आपको स्क्रीन में बताया, you are able to see all the drop downs there itself, and your class work and homework is very much visible to you. But when you see it via web, it looks like this, and parents might search where it is, kahan gaya. So it is here only. See, the student name is Kanak Asthana as of now. Okay. And we are looking at her ERP ID. Just give me a moment. Okay. Now, if I am going to academics, if I want to see the classwork, I have to click over the classwork, and I'll be able to see all the classwork that has happened in the class.
Okay, this is just an exemplar, so I'm showing it to you. And if you go down, you can see the classwork of the previous days also that have happened. So in case if you have missed out on something in that particular day, you will be able to track it on the ERP. Same is the case for the homework. See, if you are seeing here, if you have to see homework, then according to the subjects, you have homework and given on that day. And parents, please remember that we do not give all homework in one day. So one day you would see English and mathematics, another day you might see probably science and GK whatsoever. So this is just an exemplar. I just want you all to keep tracking the ERP, because if you really want to work in partnership, you have to get into the habit of tracking children's work and progress. Attendance also, if you want to see attendance, you can select the month, you can see the same day attendance as well. There is report card. I will not go into much detail about it. Reason being, the teachers will definitely conduct the training. So it is just for the sake that I wanted to let you all know that this is happening. So I know that today is Sunday morning. You have been sitting since morning, and this is an important session that we wanted to conduct with you. All right. So this is how it looks on the ERP, and you can, any confusion, anything that you want to know about ERP, you can coordinate with your class teacher and get it done. What is my strong suggestion to all the parents that before the next academic year begins, your ERP app download on your mobile set should be completed. Your ERP via web, research. How do you want to see? What do you want to see? You have to put a little effort and do it for yourself. It will definitely help you for the upcoming academic year, because everything you will be able to see at one go. So this is my personal suggestion to you, that if you have still not researched, or if you have still not get your hands upon this, get your hands upon that. It will be really helpful for you and as well as the school. All right. Now I would like to talk to you about now I'm sure that all the children who have been learning online, they want to experience the good pre-COVID environment at school, isn't it? Everybody is waiting. I have been talking to so many parents. They say that specifically the primary ones, that ma'am, when are we going to start this school? So here it is. And what's the plan? Are we going hybrid? Are we going full capacity? See, whatever ways, both ways we are ready. With the very recent announcement by the state government that you can start the school in full capacity, we will discuss in a team, we will see, and we will keep you informed about it. But for hybrid, we are definitely ready to start the school from 8th of March, right? So from the 8th of March, the school for grade 6 to 12 is already going on. We will start from 8th of March for grade 1 to 5 as well. Whether hybrid or in full capacity, we will let you know. But I want to assure you that as of now, we are ready to start the school in whatever capacity. All right. Now, the next thing that I wanted to talk to you all about is learning. If you say that we will conduct lectures, offline lectures in offline learning, 4 lectures as of now to start with. We have already begun for primary years by conducting LSRW testing. Parents, Vipin sir has already spoken a lot about LSRW testing, why we are doing and how we are doing. I only want to tell you that if these specific skills are sorted, and if the children know how to listen and respond, how to read, how to write, and then how to speak, maybe that any subject, they will be able to perform better in their own capacity. As you all know that as our 5 fingers are not same, children are not same. Definitely their performance will differ from person to person, from student to student. Some students grasp very early, some students take a little time. But having said that, our intention is that all the learners who are with us,
at least we make their LSRW skills sorted in the primary section and also in the higher grades as well. Now, what has happened is, as you all know, we all talk a lot about it, that most of the children have gone into regression. But thankfully, when we conducted the LSRW testing, the result right in front of us is, it is an exemplar report. It's a grade 1 authentic report, I must say. But if you could see below average students data, that is 1A 7 students, 1B 10 students, 1C 10 students, it is not that much, like, because as per the recent data, more than 5 crore students have lost their identification of even alphabets. So that is not the case with our school, fortunately, and all thanks to our planning, guidance given by our mentors, and the hard work put up by our teachers, and partnership of our parents. Because if you are not the partners in training children online, this was not possible, parents. So I thank you all as well. Okay. And I'm worried about these students, the absent ones. Even in the LSRW testing, these children are absent. This is really, I would say, shocking to me, because let me announce it over here that the efforts that the school is taking for the betterment of the learners, if the support is not received from the parents' end, we are going to take an undertaking and we are going to put our foot down. Let me tell you very frankly, parents, because how long are we going to chase parents to, attend meeting, chase parents to send their children to the LSRW testing or the efforts that we're taking, chase students for many other things that includes fees as well. So we are going to put our foot down, because as discussed earlier in the meeting, we are investing a lot of energy with respect to chasing. And parents, trust me, NEP policy is saying now that the parents are also equal partners in education. We have been telling this since ages, that without parent support, we will not be able to make any difference to the child's teaching learning process. So you are, of course, very cooperative, very supportive. Support us a little more. And I would say parents who know other parents, who are colleague parents, I know you all have your different groups as well, motivate them to participate in what the school is doing. Because trust me, even the students who have done very well, they have missed upon certain skills in online learning process. And we will have to give them a hands-on experience, hands-on environment to attend the offline schooling and get to know what they have missed. So we mean it by heart. It is our passion to work for students, and we are doing that. Okay. So I just want to say that we must be ready to change with new evidence. It's an evolving picture, rather to go back and explain. So responsibility of all the community in future, everyone needs to be on board, and that is important. Parents, all of us, the management, the teachers, the students, and the parents, we all should be on one common platform if we really want to make a difference towards learning for the betterment of the learners, to create them holistic individuals. We will not be able to do without you. Parents and students need to communicate to us. It should be two-way, not just the school. This is what I wanted to tell you with a lot of, I would say, impression, with a lot of insistence, that communicate, communicate, communicate. And we are not scared of feedbacks, parents. Blended learning will commence, lab work will happen. Now, this I'm talking about when we are going offline. I told you we will be having 4 lectures, 4 offline lectures. I've explained grade 1 to 4 or 5 will have 4 lectures even in offline schooling. And we are ready with the LSRW skills to test for mathematics and science also, which will commence from 8th of March. So if you are missing on the basics of that, you can start training your children.
We will still continue with blended learning. Lab work will commence whenever it is necessary, and looking at social distancing and everything. PE and dance will happen for sure. I know many of the parents must be sending your students for the physical activity that we have started. Like, we are looking at checking the health aspect of the child as well. We are testing them on basics, LSRW skills, as well as the physicality of the child. Because sitting at home, sitting right in front of the screen on the computers, lying down and studying, lying down and reading, enough of it now. Now they need to be in action. So that is why we are checking on all these things. We are looking at giving more personal attention with coursework, exam preparation, exam writing practices, etc. A lot of things. So we want better interaction in learning from all the children and with all the children. So thank you. I'll stop share now. And see, you have heard a lot of things today since morning, and you must be definitely having a lot of questions that needs to be put to us. Which session you're paying 6,000 per month? Acha, LSRW session. Okay. Parents, LSRW session, transportation, we will come back to you for transportation as well. What happens is, if all the children are coming, like, we are not going to restrict it to half of the children online, half of them offline, then transportation become a challenge for us. So we are again going to roll out the consent form to all of you, and we will look into it, how many of you are actually trying to commute through transport, and then we can think about it. But it is too late to start transport at this point of time. For the next academic year, we will surely look into it. But for these 1 or 2 months, I will still coordinate. Bipin sir is smiling. I will still coordinate, and I will see that, whether we can help something with transport or no. Yes, I agree. Parents have put in this request of transport even for LSRW skills. But parents, please try and understand we have our limitations. Students come from different sections, and for 1 or 2 students coming from longer distance, arranging the entire bus will not be a realistic approach. So that is the reason we are asking the parents to bring their children on their own for the LSRW testing. But yes, going forward, when we are having the offline schooling from 8 March, we will discuss about it, and we will definitely come back to you with a solution to it. I must say that. All right. And any other queries and questions, you can just raise your hand and put it to us, and we will be in a position to answer your question. I have kept my session very short and sweet, because I want that whatever you have learned today, or whatever you have explored today, the takeaway should be very rich, and you should give yourself time to absorb that quality thoughts that have been shared today, and then reflect upon it. Pondering upon it is very important, right? So that is why it is informative today from my end. If you have any queries, you can definitely ask me. I'm here to answer all your questions. Even Bipin sir is there. Parents, you can raise your hands and you can ask questions to us. I'd seen some question that the parent who is requesting that the transport should be given to Ulhasnagar. Yes, we are in talks of the transport vendor. The one big industry had been suffered in the pandemic is transport. And then we had already decided to start transport, but because of Omicron, then again, we had taken step back, and we were seeing that when we can start, but for the student who are staying far, we will arrange the transport. No issue. Amol sir, please send the YouTube link in the chat box to 1 or 2 questions. Saying that parent want a link. And to message also, Hina madam, we can send the link. Yes. Any parent have any other question? About our planning? Hina madam, I think parents should be aware that we are going to conduct exam offline, right? Final exam will be offline. Final exam is offline, but I have started getting requests from the parents. We will respond individually.
But we will not change our stand from conducting offline examinations. Let me tell all of you. Let the children get their own marks. That's pretty okay, because we do understand what has happened during the online examinations as well. So even if you're not comfortable, send your children for offline examinations. And we will factually not allow any parent, unless very genuine reasons, for writing online examinations. So we're keeping our stand super clear. All right. So you got to we will arrange offline exam. The parent who are out of station, they need to provide the evidence that they are out of station. Then we can take a call. And children who are sick, they need to provide medical certificate. Yeah, because that is very important. Without medical certificate, it will not be considered. If it is a genuine reason, then we will then consider for sure. One parent, you are saying that why the uniform is compulsory, that we are not asking any parent to buy 3 uniform, but if your child will come at school, he or she needs to wear a uniform. That day only I was discussing in the lobby with the Hina madam. I saw one child with the track pant and the attire what that child was wearing. It's a school, if will not keep any basic rules of basic t-shirt of uniform, it's not about 1 month or 15 days. It's about the seriousness of taking education and learning. So once we are not making it compulsory, I'd seen the child had come in night dress, the track pant and the t-shirt the child had wear was. Very right point that you have raised, Vipin sir. Parents, we are making our children very casual, and then we complain that the child is not listening to me and he's taking me very casually. They will take casual. Unless and until you get them into formal system, they will not behave formally. So, and they have missed out on this habit of behaving formally. It is 2.5 years. And it will be a challenge for parents as well as for the entire school to manage children offline. And our team is ready for that. But time and again, I'm trying to connect that only, that parents are partners for children's education from now on. So you will have to support us in whatever decision and move that we take. Your suggestions are always welcome, but then your cooperation is a must. Without that, we will not be able to follow anything. One thing I also want to tell you, there are parents who are telling that our child's uniform has become short. It is shortened now. So how will we make them wear that? I have got 2-3 responses on that aspect also. So make them wear some, if your child is, I don't think so your child is going to suddenly get a height of 2.5 inches suddenly. No, it is not going to happen. So you can start buying uniforms and you can keep it for the next academic year in that case. Right? You can use that uniform if you buy now. Parent must be having question. Meena madam, the parent had asked one question that the whether uniform will change next year. So no. So we are not going to change the uniform. Uniform will remain same. So you can start purchasing uniform, and vendor will also come in the school, and you can. Hina madam will declare the date and everything. But till then, you can purchase the uniform directly from the vendor. As a school, we are not currently arranging, I think, any vendor right now in coming week, right? Yes. See, we are meeting all the vendors as of now. We are deciding the textbooks. We are deciding upon various things like the STEM curriculum. So whenever there will be a kit, see, the management is going to spend a heavy chunk on setting up a lab and getting, online platforms for the children and blended curriculum for them to learn. That is one thing. That cost will be borne by the management for sure. But whatever the kits will be charged, whatever the books that will be charged, that will be chargeable, and that will come under school essential. Please bear it in mind, parents. Do not get confused about it, because suppose if you are starting STEAM curriculum or robotics or EduField toys or Karate Path or novels, they are all extra kits that they give it to the students. That cost will come in school essential, and that will be that will have to borne by the parents, because we will provide them the environment, but the access to the materials will be from the parents' end. And that is why we are not kind of increasing the fees as well, as of now, for this academic year.
Any you can send other in PT question? uniform. हिना मैडम आप chat में देखिए. You can send in the PT uniform. Not an issue. We had already allowed that children can come in PT uniform. P uniform. P uniform is very much allowed. P is also allowed. The regular uniform is also allowed. But the regular dress is not allowed when they're coming to a formal school. If it is an event, we upfrontly tell you, like it was a Shivaji Jayanti, we called all our children in the traditional attire, isn't it? Marathi Divas, we called few children with the attire, the traditional attire, and few of them who were watching the program with uniform. So there are certain protocols that needs to be followed. So that is the reason you send the children in uniform. You can buy it, you can write it to your class teacher if you have placed an order. We are not going to make your children wait because the child is not wearing the uniform, but you keep us informed. The entire context is that we have to mold the child into a format that is offline, which is being forgotten. See, there is a lot of fun being offline. There will be a lot of one-to-one connection with the teacher and the student. But there are certain protocols also which needs to be followed for sure. All right. If I'm trying to see some other question as well, if it is there. We have an option. Just give me a moment. Why we have option of language in Hindi and French from 6th standard? I'll tell you. Vijay, whose parent it is, I don't know, but whatever. We have an option for language in Hindi and French because when we are when they prepare themselves for board examination, they have one first language, one second language. All right. And first language is our English. Second language has to be either French or Hindi. Okay, we cannot give them both the options because of various reasons. One reason is creating too much of pressure on the child. Why do we want to create so much of pressure on the child when they're writing their IGCSE examinations? Because as such, they are going to have 7 subjects with them to write. And 8 subject will be too much for the child. If any parent want the child to appear for 8th or 9th subject in IGCSE, they are most welcome. They can come personally and discuss their feeling. So that preparation, then the school will not take the responsibility of it. We are committed for 7 subjects and we will prepare children for 7 subjects. It is as clear as that. I hope I'm clear. Then the next thing is that... Madam, then one parent is saying that Ansh Naidu, the child is bringing phone in the school. We are collecting the phones. We are not, the cell phones is not allowed at the school now. If no, you are giving now it is not allowed. If the child is sick, the parents can definitely convey their messages to the admin department and it will be communicated to the parent as well as the child. You have the class teacher's number as of now. We are going to shut the number from 5th March. I'm declaring the date. We are going to shut all WhatsApp numbers of the teacher's personal WhatsApp number from 5th March. You still have time. You can download your app. You can do all your preparations and keep yourself ready. When we shut it, that means we shut it. We are not going to respond to you. One-way communication. 9th standard student, they are bringing phone. All the students? All the students don't bring. Some of them bring, so we take it and we keep it in the admin. Okay. So, Ms. Naidu, you should be aware that if your child is bringing phone, the admin department is collecting that phones. Yes. Not be allowed in the class. Yes, sure. What will be the school time? Somebody has asked. The school time would be from 8:40 to 1:30 at this moment of time to begin with. And we have already started 1-to-1 for the children who are below average. I have shown you the list. We have identified some below average students. So their sessions for 1-to-1 will continue. Parents, please understand this is the extra effort taken by the school to prepare your children for the upcoming class. Because we have noticed regression in some children. There could be multiple reasons for the regression. The child needs more attention. The child has his own personal needs. Or maybe the parents are working, there is nobody at home to pay attention to, make them do homework or make them sit and study. So there could be multiple reasons. I'm not conveying any one reason. Whatever reason it may be,
We are looking at bringing the children at least up to an average level in the next 6 months. And let me tell you, going forward also, when we conduct our orientation program, we are going to clearly state to you that we are directly not going to jump on, conducting the syllabus in the class. Please bear my word. First, we will see to it that all the children are on one common platform of understanding the concept and having sorted their LSRW skills and all across the grades. And then only we will jump on the syllabus. Or with all these plans, we'll come back to you when we orient you for the next academic year. I'm looking for another question. Mrs. Gayatri Das, she said, I have one query, please reply. So I'm not getting your query. If you could unmute, Amar sir, if you could unmute Gayatri Das's parents, I would like to listen what query she's put. Good afternoon, ma'am. This is Ruhi. This is Vaitri's mother. My ward is a student of the class 2nd C. I was just wondering, because we had received this circular that the exams would be conducted offline and the classes would continue to be online as per the schedule that has been in the past 1.5 years, 2 years. Is it possible to stick to that? No, that was meant till February. Reason being, initially we decided to start it online, right? Start it offline from December. Then we thought we will do it in the month of January. We were just gauging and trying to understand the situation, what is happening with COVID outside. But then this Omicron came. So we went back on our decision to conduct online schooling and then offline exams. But now, since the situation is under control and all these schools are trying to open up physically, so we also want the children to have some offline experience before they start the next academic year. So this is for the pure reason that we are going to start school from 8 March offline, and we'll also conduct the examination offline. I hope I am clear. Yes, ma'am, I do get your intention. Yeah. Yeah, thank you. Any other query or question? No, besides that, nothing. Thank you. Some of the parent is asking final examination date. I guess we can declare that within a week time. It is tentatively 22nd March. And parents, please do not book your vacations before 1st May. I am announcing it right away, right now in front of all of you, because we have plans. The examinations will get over by the 1st week of April or 2nd week of April. You will have a break of 5 days where the children settle down with their last year understanding. And immediately after that, for 10 long days, we are going to start the base missing activity in the school offline. All right. And after that, in the month of June, that we will start the next academic year. But our official next academic year, we are going to roll out in April only. So if you want to book any of your tickets for vacations, book it after 1st May for grade 1 to 7. Grade 8 and 9, do not book it before 5th May. Let me tell you. We have some plans. We have to cover up a lot of missed gaps. So we will come out with all the plans for you. So that is the reason I've announced it at this very moment. Okay. I'll look for some other questions. Mr. Santosh Tikhe, that thank you. You are appreciating the school academic part, and you are having query about the sports education. Definitely, you will see the biggest changes in sports curriculum in coming years. As we are developing the infrastructure for STEM curriculum, same way we are going to develop that sports curriculum in our ground. So multi-purpose court will be there, multi-sports court will be there. A lot of activities will be planned according to student grade and so don't worry. Definitely you'll see the next change in sports curriculum. Miss Farida Kasim, I think Kasim's mom, you want to know about the checkpoint. See, parents, for checkpoint for primary section and for grade 8, that is secondary checkpoint examinations, we are not going to conduct this academic year. Reason being, we want justice with the children. If we directly instill them to checkpoint examinations,
We don't know how much well they will be able to do because of the regression of many children. See, many children will be doing very well. I do not deny about that. But we think children as a whole children. Like if I'm talking about instilling checkpoint examination to my grade 6 children, I mean all grade 6A and 6B children at one point of time. If any 5, 7 children are also not up to the mark, I will not instill that particular checkpoint examination to your wards. So that is the pure reason that we are not instilling checkpoint examination at this moment of time in this academic year. But for the next academic year, we will surely go for it. For primary checkpoint as well as for secondary checkpoint. And however, in the month of April, we are going to gauge from our end, internal checkpoint can happen for sure. All right, we can gauge the preparations of the children for good afternoon, Mr. Mandar. Good afternoon. Good afternoon. I think any other question that we have? If any parents has missed upon any questions, Amol sir, if you see raise hands, please give them opportunity to talk because we will clarify their doubts now. And parents, it's a request, we will definitely roll out the link for today's program for all the parents who have not viewed today's program. But I really get disappointed by looking at the attendance. Such crucial events where it is very pivotal for your child's future progress. I think minimum 4 to 5 events where parents' attendance is required, it should be attended. So please communicate amongst each other. Nowadays, you have made strong bonds. I am aware about it. You have your own personal WhatsApp groups of your own classes. So you should discuss good things also on those groups, isn't it? Hina madam rightly pointed out the absent parent, the parent who did not attend today's event. They will not understand the school fees circular when we will send. They will not understand the same curriculum planning. They will not understand that the Y fees is not increasing. What are the fees rule? And these people will start saying different thing without understanding. So I just want the parent who are attending event, please convey them the crux of the event, the talk, the communication we are doing, the reason behind. Then many miscommunication happened among the parent that without understanding we discuss things. So make sure convey the message in your group, the school purpose of what we are going to do with next academic year and coming 1 month. Okay, there are some parents who are saying we both are working and it will be very difficult for our child to bring the child at school. As we discussed that we are trying to work out on transport. If it is workable, then it is all right. If it is not workable, we will come back to you with the solution. Don't worry. We always understand genuine reasons and we support the parents. And we have been supporting the parents. It is not that we are not that rigid that we do not, help you out. We have helped you out in all aspects. So the parents who are having these concerns, you may address us separately through your class teachers through emails, so that we can function it out. But before that, if you work out on transport, this problem will not arise for you, I'm sure about that. Okay, I don't see any other questions, sir. If you can, I think Miss, I think Miss Pujara, she is at Ukraine. I hope everything is fine at Ukraine. I know there's a lot of crisis. We have received information that Mrs. Pujara, Mrs. Pujari, Sachi Pujari's mother, I think so. So, Mrs. Pujari, you have already given us a letter stating that your child will be able to only attend online schooling, and you have given it in advance to us, like more than 3 months in advance. So your application is accepted and it is granted, and we will help you out with conducting the examinations. And as Bipin sir very rightly said, from the school's end, we wish you all the best and we wish you safety and security in Ukraine at this point of time. I hope you all are good. Mrs. Shinde, you are asking about the sports activities. I think your child is in grade. Which grade her child? 1. Grade 1. Mrs. Shinde's child is in grade 1. Grade 1. Okay.
So detail, I don't know you are aware about the sports activity. We generally provide 2 activity in each grade for sports: swimming, skating, karate, skating. Some students are having activity with the volleyball and chess and all these things activity we are providing since many years. So as per the grade, that activity will be provided. Yes. Some parent is asking about what about shoes and socks. See, shoes and socks, if you have not bought it at this moment of time, I do understand. I will not stress much upon it. And going forward also from June, when you come back to school, it will be the season of sandals. So I will not impress much upon it, shoes and socks at this moment of time. If you have white socks and black shoes at home, you can make the child wear and send the child to the school. This is a special consideration, I must say. But from June onward, it will be June to August, it will be black sandals. September, if rain subsides, then it will be the school shoes and socks, which you will have to buy when you are buying the school essentials. Hope I'm clear. All right. Okay, we are good to go, I guess. Other questions are you'll understand the exam timetable. Your child will get ample time to study. It's not a board exam; it's a school exam. So don't worry. You will get a lot Don't of worry, time. as we said that we know that the children are in regression. We know that what are the problems that are being faced by these students and the parents in last 2.5 years. So even if your child doesn't do well in examination, we do understand. We will rate them on the basis of the 3 examinations that have been conducted in this academic year. But we want to conduct it offline because we understand that what is the actual need of the children, how many children are in regression, how many parents actually help the children in writing the papers, and don't say that the parents have not helped them. I have proofs. There are some parents who have tried to maintain the integrity, but some of the parents looking at the child in pressure, not wanting to help, have gone ahead and helped them. I have cases, parents have come and spoken to me about that. So to actually find out the real picture of examination, we are trying to conduct in offline. So don't be scared, don't be worried. We are there to support you and we will help you out for sure. All right. So with this, Offline examination, I would like to add one point. Offline examination is not a threat for you. It will give a lot of benefit to your child, that you will understand the clear picture. Teacher will understand the clear picture. School will understand the clear picture. So make sure, without any other, if you are having any strong reason that you won't be able to attend offline exam, it's fine. But make sure that your child should attend the offline exam. Then only you will understand the real picture. It's needed. We want to see that how your child is performing, so we can work on your child. So if it will be fake result if he is attending from home or house, and then we will not understand the real picture. As like the student who are coming for the 30%, they are not developed the LSRW skill, and we are working on it. So your child will miss this kind of session. We will assume that he is okay in all the things which he is attending. So make sure, we need to send your child. You need to send your child for the offline exam. Must. Okay, Savita Awad, one parent is asking what is the maximum strength of children in the class. See, the maximum capacity is 35 to 37 children in a class. All right. If we go hybrid, then half of it. All right. If we go hybrid, if we go in full capacity, then all full children, because we are an international school and we have proper arrangements of the desk and benches in the class, so there will be no claustrophobic situation in the class. So we can assure you that well ventilated, well guarded activities will happen in the class, even if we are calling to see there are 39 children. Mrs. Award, 39 children, there are children who are studying from abroad also. They are not the children who are in the actual class. We have given them the admissions with the promise that we will not be able to continue their studies if they come online. Okay, thank you so much. So it is clear to you. So please do not consider that we will not have, our class capacity is not more than 37. How are you going to admit 39 students? We will not admit. All right. This we have done only specifically for the online schooling. So I hope the talk is very clear. Mrs. Awad is happy, it seems. Okay, ma'am has come very fast from her. All right. Thank you. All right. Okay. I think we're good to go. We have had a very important
Kashish Nainani. Yes, hello, Mrs. Nainani. Yeah. Any query that you have, or you just wanted to say hello? Hi and hello. So hi and hello to everybody, and we will wish to say goodbye now because it is lunchtime approaching, and I know everybody's stomach must be growling at this point of time. Who has a query? Paresh Kunekar. Yes, Mrs. Kunekar, what query you have? You can put your query very quickly in the chat box, or you can, Amol sir, if you can unmute the parent can ask. Yeah, am I audible, ma'am? Yes, you are very much audible. Which grade is your child in? She is in first grade, Savi Kunekar. So Okay. currently we are out of station, and since 1.5 years we are out of station, and currently at least for 2-3 months, we cannot manage to come to Kalyan because of some reason. So is it okay if she'll give online exam? As I told you, That is my parents query. who are having genuine reasons, I am again declaring it, parents who are having genuine reasons and they are outstation since the beginning or since last 6 months, or they are not well, we are going to consider the cases. We have not denied that. Okay. Only thing, you have to keep us informed through email, through a request letter, well in advance. Then and then only we will be able to help you out. Otherwise, we will not be able to help you out if you let us know at the 11th hour. Then I will consider absent. All right? So much, yeah. Most welcome. Mrs. Nainani, if you had a query, you can be unmuted and you can ask. Amos, if you can mute Miss Nainani. Yeah. Good afternoon, ma'am. Very good afternoon. Which grade? Ma'am, 4th B, Vivan Nainani's mother this side, ma'am. Oh, yes, Mrs. Yes, Nainani. yes. Ma'am, little query regarding the English subject, ma'am. If the teachers can help us with the paragraphs, like unseen paragraphs, which teacher asks in the papers, if some for practice the child gets. So, ma'am, I think not only my Vivan, every student in 4th A, 4th B, everybody will be little helpful for them, ma'am. As yourself, as your good self very well said, to come from online to offline is challenge for everybody, even for teachers, for ma'am, for sir, for us, everybody, ma'am. So it's a little request if some English teachers will give us some unseen paragraphs which will come for their practices, ma'am. It will be very helpful for us. I will speak to the teacher and we'll give you some passages and we will make sure that one of the passage comes in the examination. But the condition is all 5 passages must be done thoroughly. Yes, Then ma'am. Will only be that done one passage thoroughly. will help you. Yes. Thanks a ton, ma'am. Thanks a ton for your this consideration, ma'am. Thanks a ton. Thank you. Yeah, ma'am. Yeah, grade 2 also. We will send you 3 to 4 passages and we will let you know. I mean, you will have to make child do all 3-4 passages and any one out of the unseens can be asked. Okay. All right, I think we are good to go. And if you have further queries, you can post it to us. You can meet us by taking appointment and all your queries will be addressed to and it will be sorted. Sir, are we good to go? Yes, we'll. So thank you, parents. Sir, thank you everybody once again. I wish you a very happy, healthy and safe day ahead. Goodbye. Over to Rumela, madam. Thank you so much, ma'am. I have posted a feedback link. Dear parents, it is really appreciated to get feedback. So, hello, am I audible? You were muted for some time. Okay. Dear parents, we really appreciate the feedback. So I'll be posting a feedback link in the chat box. Kindly fill the feedback form. Thank you so much, ma'am, for your words. Now I would like to call upon Rumila, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. A very good afternoon to all the parents and all the dignitaries present over here. I'm so sorry. I would like to propose the vote of thanks for today. Thank you so much, everybody. I, Mrs. Rumela Mukherjee, feel proud to propose the vote of thanks for this meet. First of all, I would like to extend my sincere thanks to the Almighty for making today's academic meeting session a resounding success. With His blessings and grace, we are able to make this session what it is. A big thanks to the speaker of the day, our Honorable CMD,
Mr. Bipin Pote sir, our beloved principal ma'am, Mrs. Hena Falke ma'am, and all the dignitaries present in the meeting today, who has given us a session with lot of worthy takeaways which will surely help everyone to instill the core values and especially to our learners. I would like to extend my gratitude towards our management and to all the people and all the heads for providing such a platform for the betterment of our learners. A special thanks to all our dedicated parents for making this session a grand success. So, with this warm words and a kind message, we move to the end of today's meet. Thank you. Have a nice day. Thank you all. Thank you so much. Amol sir, the session can be end.